The CSR Journal, a digital and print news publication established under Mumbai-based Research Rating and Communication Private Limited, was founded in CSR Awards 2022 with India First as its theme. How does the CSR Journal contribute to the India First theme? We at the CSR Journal aim to motivate, encourage and inspire corporates and other community endeavors, as well as our citizens, to come forward and do something for the benefit of the society and our fellow citizens, particularly those who are disadvantaged and marginalized. The CSR Journal Excellence Awards is a humble initiative to recognize and honor corporate social responsibility leaders from all across India who have succeeded in fulfilling their social obligation. When we talk about society, we don't just mean people, we also mean our canine friends and the environment. The CSR Journal takes great pride in the fact that the CSR Journal Excellence Awards are genuine, thoroughly researched, and have had a full background check performed by a reputable and experienced knowledge partners. The initial stage is internal screening, during which our internal staff creates a shortlist based on several fundamental criteria. In the second phase, which is pretty extensive, we have expertise partners that are finest in their respective sectors. The top 3 finalists in each category are summarized and presented to the final jury. This process takes 4 to 5 months to finish. Yes, we take our time to make sure the judgment is truthful, impartial, and just. Yet, this is not all. Our applicants must successfully navigate a more rigorous level of screening with our illustrious panel members. During a live Q&A session we conduct electronically prior to the event, representatives are questioned about their various CSR initiatives by members of our jury as part of the evaluation for the awards. You're doing some more things, but none of that appeared visionary or up to date or what is actually the need of the program which has actually changed the pedagogy of teaching, learning Hindi. How do you measure the students are learning 1.6 times better than what exactly initially they were? The first step is to have at least the infrastructure in place. Only then can we go to the next level of improving the content. And I know that 120, 160 crores, 125 crore on an average this year you spend. So what are the plans for that? Our major focus is in education, and education right from pre-primary school to world-class university. So do you think that the Naxal movement has taken a back seat because of this initiative of yours? This can be one of the measures which is significant in mitigating the problem of Naxalism. I'm pleased to welcome everyone for the Q&A session for the health and sanitation category. Any kind of evaluation or impact evaluation that you have done by a third party or by any credible organization? Bhaskar sir, we are very fortunate to have Lady Irwin College, the most amazing college which has been continuously in touch with PNS programs. How do you operationalize it, and what challenges have you confronted by trying to operationalize it in context of the villages where you have started your work? Completing this all replenishment work and CSR activity in that area, what is the rise in water table in that area? Water levels in the wells and the bore wells was around on an average 80 feet down the ground. Groundwater is an invisible resource, and 80% of India's drinking water needs to depend on groundwater. So how have you ensured that they don't change over to again water guzzling crops? You're in attendance for the live event, which is where the awards process ends. We congratulate the winners in advance for this evening, and our heartfelt gratitude to who not win a title this time, because, to quote American physician, philosopher and author Dr. Debasish Mridha, winning has a value for ego, but participation has value for life.
have been adjudicated. Shri Shinde कुशल मेडिकल डॉक्टर है. The CSR Journal, a digital and print news publication established under Mumbai-based Research Rating and Communication Private Limited, was founded in 2014. We are a group of enthusiastic and passionate journalists who work with the goal of giving our readers first-hand information in the areas of corporate and citizen social responsibility. The CSR Journal provides its readers with news and feature stories on both print as well as audiovisual platforms. We welcome you all at the 5th edition, the CSR Journal Excellence Awards 2022, with India First as its theme. How does the CSR Journal contribute to the India First theme? We at the CSR Journal aim to motivate, encourage and inspire corporates and other community endeavors, as well as our citizens, to come forward and do something for the benefit of the society and our fellow citizens, particularly those who are disadvantaged and marginalized. The CSR Journal Excellence Awards is a humble initiative to recognize and honor corporate social responsibility leaders from all across India who have succeeded in fulfilling their social obligation. When we talk about society, we don't just mean people, we also mean our canine friends and the environment. The CSR Journal takes great pride in the fact that the CSR Journal Excellence Awards are genuine, thoroughly researched, and have had a full background check performed by our reputable and experienced knowledge partners. The initial stage is internal screening, during which our internal staff creates a shortlist based on several fundamental criteria. In the second phase, which is pretty extensive, we have expertise partners that are finest in their respective sectors. The top 3 finalists in each category are summarized and presented to the final jury. This process takes 4 to 5 months to finish. Yes, we take our time to make sure the judgment is truthful, impartial, and just. Yet, this is not all. Our applicants must successfully navigate a more rigorous level of screening with our illustrious panel members. During a live Q&A session we conduct electronically prior to the event, representatives are questioned about their various CSR initiatives by members of our jury as part of the evaluation for the awards. You're doing some more things, but none of that appeared visionary or up to date or what is actually the need of the a program which has actually changed the pedagogy of teaching, learning Hindi. How do you measure the students are learning 1.6 times better than what exactly initially they were? The first step is to have at least the infrastructure in place. Only then can we go to the next level of improving the content. And I know that 120, 160 crores, 125 crore on an average this year you spent. So what are the plans for that? Our major focus is in education, and education right from pre-primary school to world-class university. So do you think that the Naxal movement has taken a back seat because of this initiative of yours? This can be one of the measures which is significant in mitigating the problem of Naxalism. I'm pleased to welcome everyone for the Q&A session for the health and sanitation category. Any kind of evaluation or impact evaluation that you have done by a third party or by any credible organization? Bhaskar sir, we are very fortunate to have Lady Irwin College, the most amazing college which has been continuously in touch with PNS programs. How do you operationalize it? And what challenges have you confronted by trying to operationalize it in context of the villages where you have started your work? Completing this all replenishment work and CSR activity in that area, what is the rise in water table in that area? Water levels in the wells and the bore wells was around on an average 80 feet down the ground. Groundwater is an invisible resource, and 80% of India's drinking water needs depend on groundwater. So how have you ensured that they don't change over to again water guzzling crops? You are in attendance for the live event, which is where the awards process ends. We congratulate the winners in advance for this evening, and our heartfelt gratitude to all the participants
who could not win a title this time because, to quote American physician, philosopher, and author Dr. Debasish Mridha, winning has a value for ego, but participation has value for life. श्रीकांत शिंदे कुशल मेडिकल डॉक्टर है, श्रीकांत सांसद है तो श्रीकांत शिंदे सामाजिक कार्यकर्ता भी है। बाला साहब हमेशा कहते थे कि 80% समाज नीति आप करो और 20% जो है वो राजनीति आप करो। कतार में खड़े आखिरी शख्स तक मदद के हाथ बढ़े, इसके लिए श्रीकांत शिंदे ने एक फाउंडेशन बनाया। मेरा खुद का फाउंडेशन भी है जिससे हम मेडिकल हेल्प जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। नन्ही आराध्या भी इन्हीं में से एक है। आराध्या जब 6 महीने की थी तब नीता और साईनाथ को यह पता चला कि उनकी बेटी का लिवर खराब हो गया है, जिसके इलाज के लिए 23 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। ये तो सच में भगवान के रूप होते हैं। क्यों सब बोलते हैं हम करेंगे, लेकिन ये करके दिखाते हैं। आपके माध्यम से किसी का ऑपरेशन होता है और जब भी वो इंसान ठीक हो जाता है तो एक अलग आनंद जो है आपको उसमें से मिलता है। ये है दीपाली लाड और अर्चना मंचे। इन दोनों की हंसी साफ बताती है कि आज ये बहुत खुश है। कल्याण में 3-4 बार गए, आज आओ, कल आओ, परसों आओ, ऐसे ही बोल रहे थे। अभी तक राशन कार्ड हम लोग को नहीं मिला। यही हाल अर्चना का भी था। जो मेन था रेशन कार्ड का, मेरे को वही काम हो गया। मैं बहुत आभारी हूँ श्रीकांत शिंदे जी का। उल्लास भी सरकारी लालफीताशाही के शिकार हुए। ये हमारा रोड वाइडिंग में घर गया था, घर के बदले घर 9 साल लग गया। श्रीकांत जी शिंदे उनके प्रयत्न से अभी हम 6 महीने के अंदर हमको उसका रिजल्ट मिल गया। छोटे छोटे काम होते लोगों को, छोटे छोटे काम आपके लिए होते हैं, लेकिन लोगों के जिंदगी में वो बड़े मायने, बड़े बदलाव करते हैं। चाहे मेट्रो हो या फिर फ्लाईओवर, रोड या रेलवे, श्रीकांत की छवि इंफ्रास्ट्रक्चर मैन की हो रही है। मुझे पता नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर मैन कौन कहता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े काम जो है मेरे चुनाव क्षेत्र में जो है हम करते आए हैं। शिव मंदिर का वैभवशाली जीर्णोद्वार हो या फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी हॉल या शूटिंग रेंज बनाना, श्रीकांत जनता की जरूरतों को तुरंत अमल में लाते हैं। श्रीकांत शिंदे युवा दिलों की न सिर्फ धड़कन है, बल्कि मील का वो पत्थर है जो दूसरे राजनेताओं को रास्ता दिखाती है। आप एक इस सोसाइटी के भाग हो, इस समाज के भाग हो, और समाज को जो है, जो समाज ने आपको दिया है, वो समाज को फिर से लौटाने का भी अवसर जो है आपके पास रहता है। I've been adjudicated as a social media king. I would like to thank all the viewers of Bollywood Live for selecting me as the best actress on OTT. Thank you to all the viewers and jury members of Bollywood Live for awarding me with Best Actor. This new year, join me on WION with 2
I've been adjudicated as a social media king. I would like to thank all the viewers of Bollywood Live for selecting me as the best actress on OTT. Thank you to all the viewers and jury members of Bollywood Live for awarding me with Best Actor. This new year, join me on WION with 2 weekly shows that will keep you informed. This World, a show that wraps the world's biggest global stories and brings you up close with the biggest newsmakers. And a 30-minute show that aims to bring the India story to the world. We help you understand global developments from an Indian perspective. I'm Vikram Chandra, and this is WION. World is One, taking India's voice to the world. The CSR Journal, a digital and print news publication established under Mumbai-based Research Rating and Communication Private Limited, was founded in 2014. We are a group of enthusiastic and passionate journalists who work with the goal of giving our readers first-hand information in the areas of corporate and citizen social responsibility. The CSR Journal provides its readers with news and feature stories on both print as well as audiovisual platforms. We welcome you all at the 5th edition, the CSR Journal Excellence Awards 2022, with India First as its theme. How does the CSR Journal contribute to the India First theme? We at the CSR Journal aim to motivate, encourage, and inspire corporates and other community endeavors, as well as our citizens, to come forward and do something for the benefit of the society and our fellow citizens, particularly those who are disadvantaged and marginalized. The CSR Journal Excellence Awards is a humble initiative to recognize and honor corporate social responsibility leaders from all across India who have succeeded in fulfilling their social obligation. When we talk about society, we don't just mean people, we also mean our canine friends and the environment. The CSR Journal takes great pride in the fact that the CSR Journal Excellence Awards are genuine, thoroughly researched, and have had a full background check performed by our reputable and experienced knowledge partners. The initial stage is internal screening, during which our internal staff creates a shortlist based on several fundamental criteria. In the second phase, which is pretty extensive, we have expertise partners that are finest in their respective sectors. The top 3 finalists in each category are summarized and presented to the final jury. This process takes 4 to 5 months to finish. Yes, we take our time to make sure the judgment is truthful, impartial, and just. Yet, this is not all. Our applicants must successfully navigate a more rigorous level of screening with our illustrious panel members. During a live Q&A session we conduct electronically prior to the event, representatives are questioned about their various CSR initiatives by members of our jury as part of the evaluation for the awards.
You're doing some more things, but none of that appeared visionary or up to date or what is actually the need of a program which has actually changed the pedagogy of teaching, learning Hindi. How do you measure the students are learning 1.6 times better than what exactly initially they were? The first step is to have at least the infrastructure in place. Only then can we go to the next level of improving the content. And I know that 120, 160 crores, 125 crore on an average this year you spend. So what are the plans for that? Our major focus is in education, and education right from pre-primary school to world-class university. So do you think that the Naxal movement has taken a back seat because of this initiative of yours? This can be one of the measures which is significant in mitigating the problem of Naxalism. I'm pleased to welcome everyone for the Q&A session for the health and sanitation category. Any kind of evaluation or impact evaluation that you have done by a third party or by any credible organization? Bhaskar sir, we are very fortunate to have Lady Irwin College, the most amazing college which has been continuously in touch with PNS programs. How do you operationalize it, and what challenges have you confronted by trying to operationalize it in context of the villages where you have started your work? Completing this all replenishment work and CSR activity in that area, what is the rise in water table in that area? Water levels in the wells and the bore wells was around on an average 80 feet down the ground. Groundwater is an invisible resource, and 80% of India's drinking water needs depend on groundwater. So how have you ensured that they don't change over to again water guzzling crops? You are in attendance for the live event, which is where the awards process ends. We congratulate the winners in advance for this evening, and our heartfelt gratitude to all the participants who could not win a title this time. Because, to quote American physician, philosopher, and author Dr. Debasish Mridha, winning has a value for ego, but participation has value for life. श्रीकांत शिंदे कुशल मेडिकल डॉक्टर है, श्रीकांत सांसद है, तो श्रीकांत शिंदे सामाजिक कार्यकर्ता भी है। बाला साहब हमेशा कहते थे कि 80% समाज नीति आप करो और 20% जो है वो राजनीति आप करो। कतार में खड़े आखिरी शख्स तक मदद के हाथ बढ़े, इसके लिए श्रीकांत शिंदे ने एक फाउंडेशन बनाया। मेरा खुद का फाउंडेशन भी है जिससे हम मेडिकल हेल्प जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। नन्ही आराध्या भी इन्हीं में से एक है। आराध्या जब 6 महीने की थी तब नीता और साईनाथ को यह पता चला कि उनकी बेटी का लिवर खराब हो गया है, जिसके इलाज के लिए 23 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। ये तो सच्ची में भगवान के रूप होते हैं। क्यों सब बोलते हैं हम करेंगे, लेकिन ये करके दिखाते हैं। आपके माध्यम से किसी का ऑपरेशन होता है और जब भी वो इंसान ठीक हो जाता है तो एक अलग आनंद जो है आपको उसमें से मिलता है। ये है दीपाली लाड और अर्चना मंचे। इन दोनों की हंसी साफ बताती है कि आज ये बहुत खुश है। कल्याण में 3-4 बार गए, आज आओ, कल आओ, परसों आओ, ऐसे ही बोल रहे थे। अभी तक राशन कार्ड हम लोग को नहीं मिला। यही हाल अर्चना का भी था। जो मेन था रेशन कार्ड का, मेरे को वही काम हो गया। मैं बहुत आभारी हूँ श्रीकांत शिंदे जी का। उल्लास भी सरकारी लालफीताशाही के शिकार हुए। ये हमारा रोड वाइडिंग में घर गया था, घर के बदले घर 9 साल लग गया। श्रीकांत जी शिंदे उनके प्रयत्न से अभी हम 6 महीने के अंदर हमको उसका रिजल्ट मिल गया। छोटे छोटे काम होते लोगों को, छोटे छोटे काम आपके लिए होते हैं, लेकिन लोगों के जिंदगी में वो बड़े मायने, बड़े बदलाव करते हैं। चाहे मेट्रो हो या फिर फ्लाईओवर,
रोड या रेलवे, श्रीकांत की छवि इंफ्रास्ट्रक्चर मैन की हो रही है। मुझे पता नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर मैन कौन कहता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े काम जो है मेरे चुनाव क्षेत्र में जो है हम करते आए हैं। शिव मंदिर का वैभवशाली जीर्णोद्वार हो या फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी हॉल या शूटिंग रेंज बनाना, श्रीकांत जनता की जरूरतों को तुरंत अमल में लाते हैं। श्रीकांत शिंदे युवा दिलों की न सिर्फ धड़कन है, बल्कि मील का वो पत्थर है जो दूसरे राजनेताओं को रास्ता दिखाती है। आप एक इस सोसाइटी के भाग हो, इस समाज के भाग हो, और समाज को जो है, जो समाज ने आपको दिया है, वो समाज को फिर से लौटाने का भी अवसर जो है आपके पास रहता है। I've been adjudicated as a social media king. I would like to thank all the viewers of Bollywood Live for selecting me as the best actress on OTT. Thank you to all the viewers and jury members of Bollywood Live for awarding me with Best Actor. This new year, join me on WION with 2 weekly shows that will keep you informed. This World, a show that wraps the world's biggest global stories and brings you up close with the biggest newsmakers. And a 30-minute show that aims to bring the India story to the world. We help you understand global developments from an Indian perspective. I'm Vikram Chandra, and this is WION, World is One, taking India's voice to the world. The CSR Journal, a digital and print news publication established under Mumbai-based Research Rating and Communication Private Limited, was founded in 2014. We are a group of enthusiastic and passionate journalists who work with the goal of giving our readers first-hand information in the areas of corporate and citizen social responsibility. The CSR Journal provides its readers with news and feature stories on both print as well as audiovisual platforms. We welcome you all at the 5th edition, the CSR Journal Excellence Awards 2022, with India First as its theme. How does the CSR Journal contribute to the India First theme? We at the CSR Journal aim to motivate, encourage and inspire corporates and other community endeavors, as well as our citizens, to come forward and do something for the benefit of the society and our fellow citizens, particularly those
the beginning of this evening's ceremony, ladies and gentlemen. इसी के साथ मैं यही कहूंगी कि ये रोशनी हम सभी की जिंदगी के अंधकार को भी दूर करे, जिस तरह से आप सभी के एफर्ट्स पिछले 1 साल में करते आए हैं, और उन्हीं एफर्ट्स को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं. थैंक यू सो मच. Thank you so much. I request everyone to please take their seats as we continue with tonight's event. CSR. We are all aware of this tremendously powerful abbreviation. Help is given to a worthy person simply because it is a duty to give without expecting anything in return. At the proper time and in the proper place is stated to be in the mode of goodness. CSR begins first at home. Our nation, India, Bharat. And it is my great honor and pleasure to welcome you to the 5th year of the CSR Journal Excellence Awards. जोरदार तालियां हो जाएं. जहां आप हमारे देश में होने वाली अद्भुत CSR इनिशिएटिव से रूबरू हो सकेंगे. The purpose behind ringing the bell is to call for our mind's attention to attend to something auspicious. Right now we are going to experience something like that with our bell ringing ceremony. The vibration and the sound wave you will feel will be the CSR Journal's celebration of its achievements and milestones. We extend our warm thanks to Mr. Ashish Chauhan, MD and CEO National Stock Exchange, for welcoming us here. The 5th year of the CSR Journal Excellence Awards marks a milestone halfway point in its decade-long valued vision of India First. The year 2014 is significant and memorable as the CSR Journal began with the aim of creating a space and addressing a major gap in journalism, that is writing and reporting on the social sector in India, deconstructing its multiple layers. The CSR Journal is more committed than ever to represent the ever-growing voices in the social sector. Now I would like to invite our guest of honor, Shri Mangal Prabhat Lodhaji, Mr. Amit Upadhyay and Mr. Ashish Chauhan for initiating the bell ringing ceremony to mark the beginning of this event. जोरदार एफर्ट्स इतने अच्छे रहे हैं तो बेल भी थोड़ी और लवली थैंक यू सो मच. This was actually a very unique experience. I request everyone to please take your seats and we will be proceeding forward so that we can start with the awards. But before that, our nominations and top 3 in the 5 award categories for the CSR Journal Excellence Awards 2022 of Agriculture and Rural Development, Education and Skill Training, Environment, Health and Sanitation and Women Empowerment and Child Welfare reflect the role corporates play towards nation building through their CSR programs. The Excellence Awards is an annual occasion and a platform where the CSR Journal brings together and recognizes meaningful contributions in corporate and citizen social responsibility. So, to understand the complete application and evaluation process and our top 15 nominees across the 5 categories, I would request you to please shift your focus on the screen so that we can explain you this even better. Can we please play the AV now? The CSR Journal, a digital and print news publication established under Mumbai-based Research Rating and Communication Private Limited, was founded in 2014. We are a group of enthusiastic and passionate journalists who work with the goal of giving our readers first-hand information in the areas of corporate and citizen social responsibility. The CSR Journal provides its readers with news and feature stories on both print as well as audio reading platforms. We welcome you all at the 5th edition, the
CSR Journal Excellence Awards 2022 with India First as its theme. How does the CSR Journal contribute to the India First theme? We at the CSR Journal aim to motivate, encourage and inspire corporates and other community endeavors as well as our citizens to come forward and do something for the benefit of the society and our fellow citizens, particularly those who are disadvantaged and marginalized. The CSR Journal Excellence Awards is a humble initiative to recognize and honor corporate social responsibility leaders from all across India who have succeeded in fulfilling their social obligation. When we talk about society and their social obligation, just in the field, we also need our human friends and the environment. The CSR Journal takes great pride in the fact that the CSR Journal Excellence Awards are genuine, thoroughly researched, and have had full background check performed by reputable and experienced knowledge partners. Each stage is internal screening, during which our internal staff creates a shortlist based on 7 fundamental criteria. In the second phase, which is pretty extensive, we have expertise partners present finest in their respective sectors. The top 3 finalists in each category are summarized and presented to the final jury. This process takes 4 to 5 months to finish. Yes, this is take our time to make sure the judgment is truthful, impartial, and just. Yes, this is normal. Our applicants must successfully navigate a more rigorous learning experience with our illustrious panel members. During the live Q&A session, we conduct electronically prior to the event. The representatives are questioned about the various CSR initiatives by members of our jury as part of the evaluation of the
Well, इसे कहते हैं फ्यूचर. ये AI है जिन्होंने कि एडवांस में सारे विनर्स को कंग्रेचुलेट कर दिया. But we are all here, present this evening. So we are going to congratulate each and every winner in person, ladies and gentlemen. But before we move ahead, and proceed towards the awards, I would like to call Mr. Amit Upadhyay, Mr. Ashish Chauhan, and Mr. Rajesh Chaturvedi, co-founder and chairman at Factors PR, to please join us here so that you can welcome our guest of honor, Shri Mangal Prabhat Lodha ji, and please take the dais here. Ladies and gentlemen, put your hands together for all our dignitaries joining us on stage. Please take the dais here. Ladies and gentlemen, put your hands together for all our dignitaries joining us on stage. So much, gentlemen. Mr. Upadhyay, Mr. Chauhan, and Mr. Chaturvedi, I would request you to please express our warm welcome to our guest of honor. On behalf of all of us present here, if you can please felicitate our guest of honor with a bouquet of flowers. If you can please felicitate our guest of honor with perfect a bouquet of flowers. Perfect. Thank you so much, sir, for giving us your time this evening. It means the world to us. We also have a very special token of appreciation from NSE for our guest of honor. We also have a very special token of appreciation from NSE for our guest of honor. This is a special memento by NSE, which I would request you, Mr. Chauhan, to please present to our guest of honor. This is a special memento by NSE, which I would request you, Mr. Chauhan, to please present to our guest of honor. Thank you so much, sir. It's truly an honor to have you here this evening amongst all of us. Thank you once again. All right. Now it is time to move towards the awards. और मैं कहूँगी कि भारत, हमारा देश जो है, ये सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ये एक इमोशन है, ये एक जुनून है जिसे बेहतर बनाने की कोशिश में हम सब ही जुड़े हुए हैं. Every year जो है, ये सिर्फ एक देश नहीं बल्कि ये एक number of applications for the CSR Journal Excellence Awards, reflecting an ever-growing commitment and responsiveness from corporate India. The CSR Journal introduced the Special Commendation Award in Corporate Social Responsibility to represent and recognize on this platform social initiatives that bring forward emerging ideas, areas, newer voices and innovation in approach and practice. To honor our first winner for this year's Special Commendation Award in CSR, I would like to invite Coca-Cola India Private Limited to receive this year's Special Commendation Award in CSR for their project Unnati at the hands of our guest of honor. Coca-Cola India Private Limited to receive this. Come on, जोरदार तालियां हो जाए, पहला अवार्ड आज शाम का. Also, while you're making your way to the stage, I would like to talk a little about Project Unnati. Started in 2018 under Project Unnati, a total of 2 lakh farmers were to be benefited through training and nearly 12,000 acres were to be brought under modern cultivation through hand bonding in orchard establishment. And nearly 12,000 acres were to be brought under modern cultivation through hand bonding in orchard establishment. Thank you so much, sir. Thank you and congratulations
Congratulations once again to Coca-Cola India. Up next, I would like to ask Shuffler India to please come and join us on stage to receive the Special Commendation Award in CSR for their project Jal Sahara. Up next, come on, we have to clap. India to please आज awards stage to receive. की लिस्ट बहुत लंबी है, इसीलिए एनर्जी बना करके रखना बहुत जरूरी है. We have to clap for each and every person walking up on the stage this evening because उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो कि सच में सराहने के काबिल है. The project started in May 2019 and completed in December 2021, focusing on addressing the challenges of water security and sustainable livelihood development, capacity building of community, soil and water conservation measures, water storage measures, agriculture development, livelihood generation for landless, sustainability fund and convergence. Congratulations, Shuffler India. And thank you so much. Alright, once again, now I would like to invite United Breweries Limited to please come on stage to receive the Special Commendation Award in CSR for their project Haritas Samruddhi. Thank you so much. Alright, once again, now I would like to invite... Alright, थोड़ी और जोर से तालियां. ये तो सिर्फ शुरुआत है. Over the project duration, UBL recharged 350 wells, restored 10 wells, installed 82 rooftop rainwater harvesting units, deepened 19 ponds, constructed 2 check dams, 5680 water absorption trenches, 127 gully plugs, farm bunds in 52.8 acres of land and planted 18,850 saplings. Thank you so much everyone and hats off to the team of UBL. Up next, I would like to invite Capgemini Technology Services India Limited to please come join us on stage to receive the Special Commendation Award in CSR for their project Digital Citizenship. Up next, I would like to invite... Lovely, lovely. I like how we are now all charged up. Please come join us on stage. Alright, let me tell you about their project a little. Started in 2014, the project is operational in 13 cities. Mumbai, Pune, Bangalore, Hyderabad, Gurgaon, Noida, Gandhinagar, Bhubaneswar, Chennai, Trichy and Salem, Kolkata, Coimbatore. And ये तो सिर्फ शुरुआत है. The target beneficiaries for the project covers the children from grade 6 to 10 of government schools and digitally excluded citizens from the age group of 14 to 70 years. Thank you so much and congratulations to the entire team. The target beneficiaries moving forward with the first part of the CSR Journal Excellence Awards 2022, which is Environment. Environment is the broader discourse in which we've come to imagine our worldview, whether it is in relation to transformation of rural and urban, agriculture and food systems or natural resource management. There is an ever-growing emphasis on looking at environment for sustainable development, shifting away from making mere considerations for environment in the development and planning discourse. Many congratulations to our top 3 in environment. I'm going to announce the names now and then later we'll tell you con first, con second, con third. So that's how it's going to go. Sterlite Technologies Limited, Holistic Water Program, Tata Capital Limited, Climate Action, Water Security and Renewable Energy, Indian Oil Corporation Limited, 5 tons per day cattle done to biogas plant at Gorakhnath Temple, Gorakhpur, Uttar Pradesh. This sparks many thoughts and on that note, I am honored to invite on stage our esteemed juror for the environment category, Professor Bakul Rao, Center for Technology Alternatives for Rural Areas, Indian Institute of Technology, Bombay. I am honored to invite on stage our esteemed juror for the environment category, Professor Bakul Rao, Center for Technology Alternatives. Thank you so much, ma'am, for joining us on stage. You know, can we have one more mic? I would like to ask ma'am a question, please. मैम माइक वहीं पर है, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी. मैम फॉर जॉइनिंग अस ऑन स्टेज. यू नो कैन वी हैव Yes, please. Thank you so much for being here. मैं आपसे ये जानना चाहती थी, आपने इतने सारे projects को judge किया है, efficiency देखी है. Was there like some uniqueness or common point when it came to different projects in the environment category? कोई एक ऐसी चीज है क्या जिसके पीछे सभी काम कर रहे हैं और जिसपे जरूरत भी थी काम करने की शायद? आपने इतने सारे projects environment किया है, efficiency देखी है. Was there like is the mic on? Yes. Or common point when it came to So environment is such a sector where you
do something and the results come so later on. So what we found is every company is trying to put in their efforts. Is the mic on? And of course the top 3 have tried to see that Environment is such a sector where so sustainability is very much important for environmental projects. And that's one thing which we saw in many of the projects which have come. And it was very difficult to come to this 3. Yeah. So I'm telling you as part of the previous exercise we did as knowledge partners. Okay. And yes, This is one of the most important categories. That is why we have it first also, because मुंबई में फरवरी के महीने में 38 डिग्री टेम्परेचर होना जो मुंबई के नहीं है, ऐसा मुंबई नहीं हुआ करता था. हमारा मुंबई बहुत प्लेजेंट था, बट अब सो भी इट, यहाँ पर हम थोड़ी हॉटनेस बढ़ा रहे हैं मुंबई की. बट थैंक यू सो मच फॉर दैट रिस्पॉन्स मैम. एंड इफ आई मे, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अनाउंस द सेकंड रनर अप इन द एनवायरमेंट कैटेगरी. ऐसा मुंबई नहीं हुआ करता था. second runner up is Indian Oil Corporation Limited. Alright, जोरदार तालियां हो जाएं. Congratulations to Indian Oil Corporation Limited. Thank you so much for that response, ma'am. And if I may, I request you to please announce the second runner-up in the environment category. The second runner up is Indian Oil Corporation Limited. Alright, जोरदार तालियां हो जाएं. Congratulations to Indian Oil Corporation Limited. Congratulations. हमारी टीम ने काम Congratulations. Thank you so much, sir, and congratulations to you once again. Ma'am, I would request you to please announce the name for the first runner-up, with which actually we would also know who the winner is, but please do the honors. So the first runner-up is Sterlite Technologies. Alright then, congratulations to Sterlite Technologies Limited for securing the second place at the CSR Journal Excellence Award 2022 in Environment. Your efforts have been well received. We do not have a representative from Sterlite Technologies Limited today, so we will be moving forward. It is my pleasure to invite on stage the winner. मैं नाम लूँ उसके पहले आप एक बार नाम तो ले लीजिए, अच्छा लगेगा आपको. Tata Capital Limited, the winner in the environment category, ladies and gentlemen. We do not have a representative from Sterlite Technologies Limited today, so we will be moving forward. It is my pleasure to invite on stage the winner. मैं नाम लूँ उसके पहले आप एक बार नाम तो ले लीजिए, अच्छा लगेगा आपको. Tata Capital Limited, the winner in the environment category, ladies and gentlemen. हमारे साथ में यहाँ पर एनवायरनमेंट कैटेगरी के विनर्स हैं, तो मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी आप सभी से. द विनर्स, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि CSR का, सर आप सुन रहे हैं ना? They are enjoying the moment actually. It is your moment sir, लेकिन एक सवाल था मेरे पास आपके लिए. मैं आपसे जानना चाह रही थी, I'm sure you know it will only enlighten us. What is the role of CSR in sensitizing and communicating climate risks and all of it to different groups of people? क्या role play करता है? So, firstly, thank you to the CSR Journal and it is your moment sir, लेकिन एक सवाल था मेरे पास आपके लिए. what I wanted to say is that I'm sure you know it will only as a Tata Group entity, what is the role of CSR in sensitizing and responsibility is one of our key values, and our own purpose is to be a responsible financial services partner fulfilling India's aspirations. Right. So the entire theme of environment, not only environment but all the CSR projects, is based on inclusivity. It's not about only what we in the major states, cities do, metro cities, but the real India is in the hinterland, the rural parts of the country. And the entire themes of what we do, especially on environment, as Professor Bakul Rao mentioned, is to ensure that they get the best of everything and they also deserve everything. And therefore, all our efforts and the initiatives that we put in to make it a sustainable effort is what we've done over a period of years.
Thank you so much, sir. Thank you. And इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, and you are setting an example for so many other people and companies. Thank you so much for it, and congratulations to the winners once again. Thank you so much, ma'am, for joining me on stage. मैं यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मिस्टर चौहान से. सर, एक्चुअली क्या है ना, मुझे ये बात पता चली है कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जो हैं वो चाहते हैं कि आप एक छोटा सा एड्रेस जो है वो लोगों को ज़रूर दें, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिसन टू यू स्पीक एंड सो डू वी. सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज जस्ट गिव अस 5 minutes of your time, and we would all want to listen to you. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the MD and CEO of National Stock Exchange, Mr. Ashish Chauhan. लोगों को ज़रूर दें, because he wants to listen to you speak, and so do we. So I request you to please just give us 5 minutes of your time. आदरणीय मंत्री श्री महाराष्ट्र सरकार श्री मंगल प्रसाद लोढ़ा जी, श्री अमित उपाध्याय जी, श्री राजेश चतुर्वेदी जी, यहाँ बैठे सभी गणमान्य व्यक्ति, आज के विनर्स, आप सभी को यहाँ आने के लिए धन्यवाद. कई बार क्योंकि एनएससी एक तरह से कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, भारत के एक तरह से वेल्थ को, धन को रिप्रेजेंट करता है. तो कई बार एक सवाल सबके मन में आता है कि एक कॉरपोरेट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में कैसे हो सकते हैं. हमें ऐसा पढ़ाया गया है कि कॉरपोरेट जो होते हैं बहुत लालची होते हैं, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉरपोरेट एक तरह से विरोधाभासी है. एक जगह पे डाल के हम आपको कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो कॉरपोरेट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ कैसे हो सकता है. आप इस विश्व का इतिहास देखेंगे, पिछले 700-800 सालों में जो अभूतपूर्व प्रगति हुई है सभी देशों में, सभी जगहों पे, उसका एक ही कारण है, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉरपोरेट. जो कंपनीज नहीं होती तो इतनी प्रगति नहीं होती. जो विकास दर हुआ है, सबके लाइफस्टाइल में जितने भी चेंज आए हैं पिछले 700-800 सालों में, वो सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट्स के कारण हुआ है. वो इसका वजह यही है कि पहले जो भी बिजनेस होते थे वो या तो व्यक्ति करता था या परिवार करता था. कई बार गिल्ड्स होते थे, यूरोप में गिल्ड्स होते थे. इवन हमारे संगम लिटरेचर जो है तमिलनाडु वगैरह के, उसके उल्लेख है गिल्ड्स के, कि जो समूह मिलके कोऑपरेटिव में कार्य करते थे. और वो लोग एक तरह से स्केल नहीं कर पाते थे, बड़े नहीं बन सकते थे. जब कॉरपोरेट में एक नई व्यवस्था आई कि दूसरों के पैसे लेकर के आप और अच्छी बड़ी सुविधा बना सकते हैं, बड़े बिजनेसेस बना सकते हैं, और तब जाके ये पूरे विश्व की प्रगति हुई. तो मेरे हिसाब से जो हम जिसको लालची समझते हैं, उसी की वजह से हमारी प्रगति हुई है. और एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज वगैरह उसी का एक भाग है, कैपिटलिज्म जिसको हम कहते हैं. तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने भी देखा होगा भारत में हमारे पुराने बिजनेसेस, पुराने लोग भी चैरिटी में बड़ा मानते थे. और महाभारत में भी उल्लेख है, दानेश्वरी कर्ण जिसको हम कहते हैं, कि दान का बादशाह था, कि मरते मरते अपना दांत भी दे गया. जब वो बढ़ रहा था रण में, आपने सुना होगा कईयों ने, कि जब कर्ण जब मरने को आ गया था, उसका रथ का पहिया टूट गया था, अर्जुन ने उसको बाण मारा, और जब मृत्युशैया पे था तब जाके ब्राह्मण ने उसको कहा कि आप दान के बादशाह हो, तो आप मुझे क्या दोगे. तो उन्होंने कहा ठीक है, ये पड़ा हुआ है, ले जा भाई. तो अपने वहाँ दान की परंपरा रही है. और दान इसलिए नहीं करते यहाँ पर कि किसी को सामने जो लेता है दान उसको छोटा दिखाने के लिए. दान इसलिए करते हैं कि अपने मन को शांति, के हम समाज के कुछ काम आए. और सिर्फ राजा महाराजा ने नहीं किया, बिजनेसेस ने भी किया. पिछले 2-3 हजार साल का भी आप इतिहास देखेंगे, मौर्य काल में, उसके बाद भी गुप्ता काल में, जब भी समाज को जरूरत हुई है, बिजनेसेस ने अपने तिजोरियां खोली है. जब भी अकाल हुआ है, बिजनेसेस ने अपने पैसे बांटे हैं,
अपने धन या अनाज वगैरह को बांटा है और समाज के साथ भारत का बिजनेस हर बार हर तरह से खड़ा रहा हुआ है। पिछले 150-200 साल में भी देखेंगे, जब कॉरपोरेट्स बने भारत में, कंपनीज एक्ट जिसके तहत कॉरपोरेट बना, वो कंपनीज एक्ट 1850 यूके की पार्लियामेंट ने बनाया था, उसके तहत कंपनीज बनना शुरू है। और पहला डोनेशन मुंबई के अंदर, सबसे बड़ा डोनेशन उस समय, आज हम उसको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कहेंगे, वो था प्रेमचंद रॉयचंद द्वारा मुंबई यूनिवर्सिटी को राजाबाई टावर और जो हॉल है वो देना। वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उस समय प्रेमचंद रॉयचंद ने 1866 में दिया था। वो एक स्टॉक ब्रोकर था, क्योंकि मैं ये बिजनेस से आता हूँ, उसके ऊपर मैंने किताब भी लिखी है, तो इसलिए मुझे थोड़ी जानकारी है कि स्टॉक ब्रोकर्स भी पीछे नहीं हटे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उस समय ऐसे कई लोगों ने मुंबई के अंदर भी बहुत सारी चैरिटीज करी, कई बिजनेस। वो एक स्टॉक ब्रोकर था, क्योंकि मैं ये बिजनेस से आता हूँ, उसके ऊपर मैंने किताब भी लिखी है, तो इसलिए मुझे थोड़ी जानकारी है कि स्टॉक ब्रोकर्स भी पीछे नहीं हटे। ऐसे कई लोगों ने मुंबई के अंदर भी बहुत सारी चैरिटीज करी, कई बिजनेसेस ने करी है। आप लोगों ने जगन्नाथ शंकर सेठ का नाम, उस बिजनेसेस ने उन लोगों ने उस समय पैसे दिए थे। उसी तरह आपने जे हॉस्पिटल का नाम सुना होगा। कई ऐसी हॉस्पिटल्स हैं जो एक तरह से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत लोगों ने 100 साल पहले, 150 साल पहले बनवाए थे। और सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में हुआ, लेकिन मुंबई में आप देखेंगे, कई ऐसी हॉस्पिटल्स हैं जो एक तरह से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत लोगों ने 100 साल पहले, 150 साल पहले बनवाए थे। और सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में हुआ, लेकिन मुंबई में आप देखेंगे टाटास ने एक तरह से इतिहास बनाया है कि जितना भी उनका प्रॉफिट आता है, उसकी जितनी भी शेयर होल्डिंग है कंपनी में, एक ट्रस्ट में डाला हुआ है, वहां से चैरिटी होती है। तो एक तरह से उन्होंने एक मिसाल कायम की है टाटास ने, कि जो भी उनके कोई वारिस नहीं है, और प्रॉब्ली उन्होंने पहले से सोचा हुआ था कि ऐसे ही पैसे जाएंगे। तो साइंटिफिक रिसर्च में भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो TIFR हम कहते हैं, टाटा मेमोरियल आज बहुत उभर के आया है एज अ कैंसर रिसर्च, कैंसर ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट, जो आज भारत में 20 जगह पर सरकार ने उसको कहा है कि आप 20 जगह पर कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाइए, जिससे बाहर के लोग जो मुंबई में आते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, आप अपने घरों के नज़दीक में आए हैं। तो ऐसे मुंबई में तो कई जो बिजनेसेस थे उन्होंने मेहनत करी है। लेकिन मैं अहमदाबाद से आता हूँ, मैं गुजराती माध्यम स्कूल में पढ़ता था। उसी समय मैं जब छोटा था तो साइकिल लेकर के एक लाइब्रेरी थी, माणिकलाल जेठालाल लाइब्रेरी, उसमें जाके बैठता था, किताबें पढ़ता था गुजराती में। बाद में खैर पढ़ाई की, यहाँ पे नौकरी करने लगा मुंबई में। एक बार मैं BSc जब चला रहा था तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया, हमारे मेंबर ही थे, ब्रोकर थे, तो उन्होंने कहा कि उनका परिवार भी चैरिटी करता है और उनके परिवार ने माणिकलाल जेठालाल लाइब्रेरी अहमदाबाद में बनवाई थी। उनके दादाजी का नाम माणिकलाल जेठालाल था। तो मैंने कहा उनकी चैरिटी मेरे काम में आई। तो हर चैरिटी जो आप करते हो, सभी व्यक्ति यहाँ जो बैठे हैं, गणमान्य व्यक्ति जो आज आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पैसा खर्चा करते हैं, आप जो भी पैसा खर्चा करते हैं, आपका जो पैसा है उस समाज के काम में आता है। कहाँ पे आएगा आज आपको उसका भनक नहीं है, लेकिन बहुत जगह पे जो आप पौधे लगाते हो उसके जो फल खिलेंगे, फल मिलेंगे, वो कौन कौन खाएगा आपको पता नहीं है। लेकिन मेरे जैसे कई लोगों ने उसके फल को 20 साल के बाद, 50 साल के बाद खाने हैं। तो आप अपनी चैरिटी करते रहिएगा। भारत की एक ट्रेडिशन रही है। और 2013 में जब ये नया कंपनीज एक्ट बना था, हमारे साहब भी मौजूद है, जब वो खुद सेक्रेटरी कॉर्पोरेट अफेयर्स थे, जो आज जूरी मेंबर है, तभी भी हम दोनों ने बहुत चर्चा करी थी। उसके बाद हम दोनों ने पूरे भारतवर्ष में प्रवास भी किया था कि कैसे CSR को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने अपने लाइफ का रिटायरमेंट के बाद मिशन बना लिया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक तरह से जितना हो सके वो अपनी पर्सनल पैसे खर्चा करके भी वो सब जगह पे उसका अच्छा प्रचार। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तो करते ही है,
समाज में हर बिजनेस अपने जहां रहता है वहां पर करता है, तो आपने ये 2% प्रॉफिट का कायदा क्यों बनाया? तो जैसे मैंने कहा कि कॉरपोरेट्स भले ही एक तरह से प्रगति के कारण बने हो, लेकिन they have also been reasons for great bad. Corporates have been reasons for great good, but they have also been reasons for great bad. ईस्ट इंडिया कंपनी उसका एक उदाहरण है, जो यहाँ पे पैसे चूस के कहीं और ले गया और भारत को कंगाल करते गया। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की वजह से है कि कॉर्पोरेट्स को अपना एग्जिस्टेंस जस्टिफाई करना है। ह्यूमन होता है, एक पर्सन होता है, इवन डॉग होता है, कैट होता है, they don't have to justify their existence, they exist, they are natural people. But corporate comes out of social pact, it comes out of an act, it is not a natural person, it is a concept. And when it starts making profit, it has to justify its existence. Corporates have become very important in modern day life, and that's why they need to continue to justify their existence to the people they serve, people in areas they work in, and that's why first time in the world, this particular act, which has been considered Pioneer Act, Companies Act 2013, had this particular clause of providing 2% of the profit after tax towards CSR for companies above a particular level. And I just wanted to give you all a flavor of what went in. We started working on the new Companies Act, I think from almost 1999 onwards, almost 15 years it took to and fro, because corporates were also discussing, we were discussing, policymakers were discussing, and after that, what came out was one of the most pioneering act that is making the corporate social responsibility a compulsory activity. And that, I think, had also another perspective, that what comes out, a government was finding itself that it was actually not being able to implement its own projects despite spending money. One of the prime ministers had said that 100 rupees we spend, only 15 rupees goes to people. Whereas it was observed that corporates are able to use that money which they spend very, very effectively. And that's why this 2% will be almost like 20%, as if government was spending its 20%. So overall, almost 15 to 20,000 crores are now coming into CSR market every year. And literally it would be almost like 20 times more or 15 times more of what government would be achieving out of that. And that's what I just wanted all of you to be aware, that you are doing a great job. We are very proud of you, and salute to all of you who are doing this work in CSR area. Thank you very much. Thank you so much, sir. Actually, it was such an honor to listen to you here live in person. But now it is time to move on to another set of awards. I would request Mr. Ashish Chauhan, MD and CEO, National Stock Exchange, Mr. Vishwanath Giriraj Ji, IAS retired, former Chairman, 5th State Finance Commission of Maharashtra, and Chief Executive Officer, Maharashtra Bamboo Promotion Foundation, to please announce the next winner. So can we have you also on stage, please, sir? Please join us on stage. And I would like to welcome SBI General Insurance Company Limited to please come join us on stage to receive the Special Commendation Award in CSR for their project Buddy for Study Suraksha Support Scholarship. The project began in April 2021 and completed in March 2022, focusing on support of children who were unable to continue their education because of the impact of COVID-19. The overarching goal was to create a long-lasting impact on the lives of the selected scholars and help them overcome the financial challenges they were facing, but also encourage them to work hard towards their dreams. Thank you so much, sir. SBI General Insurance Company Limited, that was an incredible effort. Next, I request Reena Jha Tripathi, IRS Chief Commissioner of Income Tax, the first, Mumbai region, and Nidhi Chaudhary, IAS Joint Commissioner of Sales Tax, to please come on stage to announce the winners.
All right, so I request Dell International Services India Private Limited to please come join us on stage to receive the Special Commendation Award in CSR for their project gaming solution. Recognizing the need to bridge the digital divide, Dell Technologies supported development projects that use technology to transform lives. The program's location is spread across pan-India. The beneficiaries include teachers, students, and community youth. The organization has successfully managed to achieve an outreach of 1.58 million. Many congratulations to Dell's team. And thank you so much for joining us on stage. Thank you so much, all the jurors. It was really nice having you all on stage. With this, I am pleased to invite J.S. Saharia, IAS retired, former State Election Commissioner, Maharashtra, former Chief Secretary, Government of Maharashtra and Chairman, International Society for Human Awakening and Development, and Ajit Kumar Jain, IAS retired, former State Information Commissioner, Maharashtra, former Additional Chief Secretary, Government of Maharashtra, and current Chairman and Managing Director, Environmental Research Foundation, on stage to announce our next winners. All right, I invite Tata Power to please come join us on stage to receive the Special Commendation Award in CSR for their project Abha. Abha program started in Delhi in 2013 and functions in 3 of our distribution locations of Delhi, Mumbai, and Orissa. The goal was to provide sustainable livelihood and increase income of over 8,000 underserved women, psychologically and professionally elevate the women living in slums, create 150 SHGs, and train them in at least 3 employability skills. Congratulations to Tata Power. That was extraordinary. And congratulations to all of you once again. On behalf of the CSR Journal, congratulations to the 2022 winners of Special Commendation Award in CSR. All right, so with these set of awards coming to an end, it is time for me to please invite our guest of honor, Shri Mangal Prabhat Lodha ji, to address the gathering. Sir, everybody has been waiting for you to please come and speak to them one-on-one. So the stage is all yours, sir. CSR में आयोजित इस मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ की ज़रूरत है, कॉरपोरेट गिवर्स एंड टेकर्स, डोनर्स एंड रिसीवर्स, इनको साथ लेने का काम आज CSR जर्नल कर रहा है। मैं उसके ऑनर एडिटर श्री अमित उपाध्याय जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। यहाँ पर उपस्थित NSE के अध्यक्ष आशीष जी के बारे में आप जानते हैं कि जब उन्होंने BSc टेक ओवर किया था तो BSc की क्या हालत थी और कहाँ पर वो आज ऊंचाइयों पे लेके गए। NSE का भी और अच्छी है ऑलरेडी, और अच्छी होगी। श्री राजेश चतुर्वेदी जी, यहाँ बहुत सारे सीनियर IAS IPS ऑफिसर्स बैठे हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स बैठे हैं, जूरी मेंबर्स, अवार्ड रिसीवर्स। समय की मर्यादा है, मुझे 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है और कभी कभी सबसे अच्छा भाषण वो हो जाता है जो सबसे छोटा होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूँगा। मैं अभी इस किताब को पढ़ रहा था तो उस किताब में अमित जी के 2-3 सेंटेंसेज मुझे बहुत अच्छे लगे। एक तो उन्होंने कहा कि भाई
I don't celebrate the new year much because for me every day is the new year. So that's good. That's a good positive way of the life कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से करते हैं. और आपका एक और एडिटोरियल में सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा कि वी लव आवर सेल्फ्स. वो जो ज़िंदगी में वही लाइफ को जी सकता है और दूसरे को जीने के लिए और ज़्यादा उत्साहित कर सकता है कि जो कि खुद को प्यार करता हो, खुद के बारे में पॉजिटिव हो. आप जो CSR जर्नल चला रहे हैं कोई छोटी बात नहीं है. आपके इसमें एक जगह आर्टिकल में लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में कोई CSR के बारे में कमेटी नहीं बनी हुई है. देवेंद्र जी फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और बाद में जो कि हम पॉलिटिशियंस को आदत होती है, एक किला बनाता है और दूसरा आके उस किले पर लात मार के किले को तोड़ देता है. तो नई सरकार आई, उसने वो कमेटी को हटा दिया. पर आपकी भावना मैं समझता हूँ, माननीय देवेंद्र जी तक मैं आपकी बात पहुँचाऊँगा. पर मैं अमित जी आपको सच में ये कहना चाहता हूँ कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट कमेटी बनाए कि नहीं बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी की बनाए कि नहीं बनाए, CSR जनरल एक सारे CSR के एसोसिएशन के रूप में काम कर रहा है. यू आर द की पर्सन. आप सबको फेविकॉल की तरह जोड़ के रखे हुए हो और इसके लिए महाराष्ट्र में ये काम बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है. मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, नॉर्मली सबकी आदत होती है कि हम आपसे पूछें कि भाई आपको क्या डिफ़िकल्टी है, आप आइए हमारे स्किल डिपार्टमेंट में कुछ आप काम करिए, महिला बाल विकास में काम करिए, टूरिज्म में काम करिए. पर मैं आपको ये सब नहीं कहूँगा, क्योंकि यदि आपको करना होता तो आप इसमें बहुत पहले जुड़ गए होते. आप ये करते हैं पर डायरेक्ट करते हैं, सरकार के थ्रू नहीं करते हैं. वी डिजर्व दैट बिहेवियर फ्रॉम यू, क्योंकि हमने आपको कहीं ना कहीं इसके पहले तकलीफ़ दी होगी. आप जिस होप से, जिस मेहनत से हमारे पास आते होंगे, हमने उसको सपोर्ट करने की बजाय आप कहीं ना कहीं थोड़ा हर्ट किया होगा. पर मैं आज आपसे ये रिक्वेस्ट करने को आया हूँ कि आप डायरेक्ट जो CSR कर रहे हैं करते रहिए, पर उसमें सरकार का कहीं सहयोग लगता है तो मैं अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक छोटी सी 4-5 लोगों को कमेटी बना लीजिए और सरकार को कुछ मत दीजिए. आप डायरेक्ट जो कर रहे हैं उसको करने में, मान लो किसी को आंगनवाड़ियाँ एडॉप्ट करनी है तो हम आपके साथ में बिना कुछ किए हुए आपको लीगली फॉर्मली आंगनवाड़ी एडॉप्शन का एग्रीमेंट करके देंगे. न उसके बाद में आपसे कुछ पूछेंगे, न उसके पहले आपसे कुछ मांगेंगे. और ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप एक बार विश्वास करके देखिए. और CSR, मैं जितना समझता हूँ CSR को, CSR का कोई एजुकेशन का कोर्स नहीं होता, CSR का कोई स्टडी कोई सिखाता भी नहीं है कि CSR कैसे किया जाए, क्यों किया जाए. भारत के अंदर तो CSR हम सब अपने माँ के पेट से संस्कार के रूप में सीख के आते हैं और वो संस्कार ही है जो हमको प्रेरित करते हैं कि अपनी हार्ड अर्न मनी में से कुछ अपन CSR के लिए प्रदान करें. मैं मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस आपको बता के अपनी बात समाप्त कर दूंगा. मेरे फैमिली का बिजनेस है, लोड़ा कंस्ट्रक्शंस के नाम से. मेरे बच्चे भी बिजनेस संभालते हैं. तो लाइफ में कई बार बहुत डिफिकल्ट मोमेंट आप सबके लाइफ में बिजनेस में आए होंगे. टाटास को छोड़ के, टाटाज आर एक्सेप्शंस. टाटास के एक्सेप्शन होने का कारण भी आपका मैनेजमेंट स्किल तो है ही है, पर उससे ज़्यादा बड़ा कारण है आपका CSR का बाई हार्ट होना. आप CSR 2% के लिए नहीं करते हो. जब 2% नहीं था तब भी आप CSR करते थे और आज आगे भी करते रहोगे. ऐसे 4-5 ही कॉरपोरेट्स हैं जो कि लीगली या फॉर्मली या न्यूज़पेपर के लिए नहीं करते, अवार्ड के लिए नहीं करते हैं. इट इज़ इन योर ब्लड. तो मैं जब ये हमारा बिजनेस 2-3 बार डिफ़िकल्टी में आया और डिफ़िकल्टी से निकल गया तो मैंने मेरे बच्चों से पूछा कि अपन ये क्या हुआ क्या था और कैसे इसमें क्या क्या आगे जाके निकले कैसे. तो जो उस समय जो जवाब दिया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. मेरे बच्चे ने, अभिषेक ने मुझे बताया कि पापा जो आप ये अपन लोग सब मिलके कभी कभी कुछ अच्छा काम करते हैं तो अच्छा काम करने वाली की दुआ और अच्छा काम करने वाले के चेहरे पे थैंक्स फीलिंग ये अपने को सामने दिखती नहीं है, पर ऊपर कहीं पर जाती है और अकाउंट में जमा हो जाती है और वो वक्त आने पर अपना हिसाब बराबर चुका देता है. तो CSR करते रहिए. सरकार आपकी है. माननीय देवेंद्र जी तक मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा और देवेंद्र जी को आप जानते हैं, ही इज मैन ऑफ एक्शन. आपकी बात जरूर होगी, पर जब तक ये कमेटी नहीं बने तब तक इस अनऑफिशियल कमेटी के रूप में अमित उपाध्याय जी आप काम करते रहिए, सबको साथ में लेके चलते रहिए. मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले वापस रिपीट करना चाहता हूँ, पूरी सरकार के बारे में सबका अलग अलग तरीका है, पर मेरे पास जो 3 डिपार्टमेंट जब तक हैं उन तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको CSR करना हो तो आप डायरेक्ट जाके करिए. कोई सरकारी अधिकारी आपको रोकेगा नहीं. और आपको कहीं सरकार के कुछ फॉर्मेलिटी की जरूरत पड़े तो उसके लिए कभी भी आप मेरे को कह सकते हैं. मैं मेरा नंबर इनके पास लिखा के जाऊंगा, मेरा मोबाइल मेरे पास में रहता है. व्हाट्सअप मैसेज करेंगे 9820021592. कभी भी आप मेरे को मैसेज करना, विल बी मोर देन हैप्पी.
आप यदि आगे आओगे तो ही मुंबई बचेगा, तो ही महाराष्ट्र बचेगा। सरकार को बचाने के लिए आपके साथ की जरूरत है, पर हमारे को बीच में मत रखिए। हम आपको तकलीफ देते हैं, हम आपको नाराज करके रखते हैं। आज तक का हमारा इतिहास ये है, इसलिए मैं कितनी भी मीठी मीठी बात करूंगा आप मानेंगे नहीं। मीठी बात डायरेक्ट जाने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, thank you so much for that. मैं कहूँगी ऑनेस्ट एड्रेस। मतलब अगर कोई जो कि पब्लिक के लिए काम करते हैं वो यहाँ पब्लिक के सामने आकर के अपना मोबाइल नंबर बता करके कहें कि अगर कोई ज़रूरत हो तो हमें बताइए, हमें व्हाट्सएप करिए, हम कुछ कहेंगे। एक अलग रिस्पेक्ट और एक अलग विश्वास है जो कि जाग जाता है हर एक इंसान के दिल में। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपने जो कहा उससे मैं बैठी थी और मेरे दिमाग में बात याद आ रही थी कि जब इंसान सक्सीड करता है ज़िंदगी में, सक्सेस हासिल होती है, तो बिफोर यू इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यू शुड इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट एवरीबडी ओवर हियर हैज़ बीन डूइंग, एंड दैट इज़ व्हाई यू आर अ पार्ट ऑफ दीज अवार्ड्स। सो थैंक यू सो मच। एंड विद दिस पूरे रिस्पेक्ट के साथ में मैं चाहूँगी कि आप लोग ऑडियंस में प्लीज़ गेट सीटेड सो दैट आज की शाम का जो पहला एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस होने वाला है, वी कैन प्रोसीड टू दैट। Thank you so much, gentlemen, for joining me on stage and giving away all the awards. The pleasure was all mine, the honor was all mine. Can we please clear up the stage? With this, आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहूँगी कि Charles Darrow once said that if you lose the ability to laugh, you lose the ability to think. It is time we put your eager and thoughtful minds to ease by exposing you to a different shade of entertainment. अब ऐसा मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी करने वाली हूँ, वैसे चाहूँ तो कर भी सकती हूँ, लेकिन आई वुड लीव दैट टू द प्रोफेशनल्स फॉर दिस इवनिंग। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द एवर हिलेरियस चिराग पंजवानी। एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द स्टैंड अप कॉमेडियन चिराग पंजवानी। थोड़ा माहौल को हल्का बनाते हैं। हेलो, Hello, thank you everyone. Can we have a huge round of applause for RJ Ruchi? She's doing a phenomenal job. Although उन्होंने मेरे इंट्रोडक्शन दे के मेरा पूरा प्लान फेल कर दिया है, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर वो सिर्फ बोल देंगे गिव इट अप फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मर चिराग, तो मैं आके यहाँ पे जोक्स ट्राई करूँगा और अगर आप हंसेंगे नहीं तो मैं कह दूँगा एक्चुअली ये तो शायरी थी, बट अब मेरे को जोक्स करके आपको हंसाना ही पड़ेगा। I was listening to the awards और मैं बहुत confused था कि amongst all the good work that people are doing, कि टाटा ने इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, यूनिवर्सल ने इतना सॉल्व करा है, I felt very out of place क्योंकि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि मैं तो चुटकुले सुनाने आया हूँ। तो how do I belong in this CSR journal? And then it struck me कि मैं भी एक CSR एक्टिविटी का ही पार्ट हूँ। कि वो उन्होंने बोला कि ओ किसी हमें कुछ आर्टिस्ट को भी तरफ फंड्स डायरेक्ट करने चाहिए। नाइस। क्योंकि देयर वाज सम वेरी हैवी डिस्कशन व्हेन आई वाज सिटिंग देयर कि इज कॉर्पोरेट गुड और बैड, एंड एवरीबडी वाज आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दैट और सोच रहे थे, और मैं ऐसे टाइप के थॉट सोच रहा था कि ये वाला पंखा तो कभी साफ ही नहीं, खराब शोज करे हैं। जैसे एक बार मैं एक शो परफॉर्म कर रहा था, जिसमें जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो मैंने देखा एक जना फोन पे कुछ देख रहा था, मुझे लगा कुछ अर्जेंट आ गया होगा। मैं ध्यान से देखा तो दैट पर्सन वाज वॉचिंग स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोज व्हाइल आई वाज ऑन स्टेज परफॉर्मिंग स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोज। सर ये ऐसा है कि खान सर अगर आप पढ़ा रहे हैं और फिर कोई आप ही का वीडियो आप ही की क्लास में देख रहा है, कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर खान सर आल्सो, ही इज इन द ऑडियंस, आई एम अ बिग फैन। बट सर मेरी आपसे एक बहुत मेजर शिकायत है, आपने अपना यूट्यूब चैनल बहुत लेट शुरू करा, क्योंकि तब मैं अपने सारे गंदे कॉलेजेस से पास आउट हो चुका था। अगर आपका चैनल पहले होता तो आज मैं भी CSR एक्टिविटी का अवार्ड रिसीव कर रहा होता आप लोग को हंसा नहीं रहा होता। बाय राउंड ऑफ अप्लॉज कैन आई गेट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अबव 30-35? बाय राउंड ऑफ अप्लॉज अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेरी नाइस। एंड बाय अगेन राउंड ऑफ अप्लॉज बिलो 30 कौन कौन है? ओके, इट्स अ लेसर अमाउंट। ये लोग थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है यंगर लोगों को हंसाना, क्योंकि वो इन जनरल बहुत होप लेके बैठे रहते हैं लाइफ में, है ना, कि अगर परफॉर्मेंस खराब भी गया तो उनको पता होता है कि ठीक है भाई लाइफ तो अच्छी चली जाएगी।
जो एट सम पॉइंट बाकी लोगों को होता है कि वो पता नहीं भाई हंसा दे प्लीज हंसा दे, ये एक ही घंटा है जिसमें 10 मिनट का स्लॉट मिला है हम जिसमें हंस सकते हैं, वी हैव टू गो बैक टू सीरियस स्टफ आफ्टर दैट। क्योंकि 30 तक, प्लीज आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 30 तक आपको एक बेसिक आइडिया आने लग जाता है कि आपकी आगे की लाइफ कहाँ जाने वाली है कि अगर मैं किसी चीज़ में जीनियस होता, कोई नेचुरल टैलेंट होता तो वो अभी तक निकल आया होता है ना। बाकी सारे यंग लोगों को, सर खान सर क्या आप अग्री करेंगे, यंग लोगों में सिर्फ कॉन्फिडेंस होता है, जीरो डायरेक्शन होता है। उनसे तुम पूछो कि तुम क्या करोगे बड़े होके, कुछ बहुत बड़ा करेंगे लाइफ में। अरे बट क्या, कुछ बहुत बड़ा रुकते ही जाएंगे, कभी ट्रिपल एक्सल बड़ा करेंगे, बट क्या करोगे, सीईओ बनेंगे, कौन सी फील्ड के, वो अभी तक डिसाइड नहीं करा है। एट 30 आपको एग्जैक्ट आइडिया पता चल जाता है कि क्या करने वाला हूँ। बिकॉज आई ऑल्सो रिमेंबर बीइंग 21 एंड आई यूज्ड टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट माई लाइफ। कोई मेरे से पूछता था, मतलब आई वुड रीड अप अबाउट सक्सेसफुल पीपल कि ऋतिक को कब मिली सक्सेस, 26 पे, फिर तो बहुत टाइम है मेरे पास, तो मैं एक काम करता हूँ 21 से 25 तक दारू पी लेता हूँ और 25 से 26 तक बॉडी वॉडी बना के पॉपुलर हो जाएंगे। अब जब मेरे से 30 पे कोई पूछता है कि हु इज योर फेवरेट एक्टर, तो मेरे को अपना आंसर चेंज करना पड़ता है। मैं उनको बोलता हूँ बोमन ईरानी। आई थिंक उनका करियर ग्राफ बहुत अच्छा है क्योंकि 30 तक आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाता है कि मैं किस लेवल का सक्सेस होने वाला है। पहले आपको कंफ्यूजन होता है कि शायद मुझे मेरी करेक्ट फील्ड नहीं मिल पा रही है, अगर मैं ये करियर चेंज करके यूट्यूब में घुस जाऊँ और ये करूँ वो करूँ तो फिर मेरे को नेचुरली ऑर्गेनिकली मैं ग्रो करता जाऊँगा। बट अब मेरे को मालूम है कि मेरे को क्या एग्जैक्ट लेवल ऑफ सक्सेस मिलने वाला है। मैं किसी भी फील्ड में चले जाऊँ सब में मुझे सेम ही सक्सेस मिलेगा, एंड दैट इज असिस्टेंट मैनेजर। मैंने बहुत करियर चेंज करके देख लिए, बहुत फील्ड चेंज करके देख लिए, सब में असिस्टेंट मैनेजर पे ही अटक जाता हूँ। इनफैक्ट आई एम फुली कन्विंस्ड कि अगर कल को मैं खुद का स्टार्टअप भी शुरू करता हूँ तो उसमें भी मैं फाउंडर / असिस्टेंट मैनेजर ही रहने वाला हूँ। Oh wow, there's 1 person clapping, 2 person clapping, which I think is worse than nobody clapping, no? क्योंकि अगर एक जना हंस रहा हो तो ऐसा लगता है ओ मेरे को इस इंसान के जैसे 200 लोग और इकट्ठा करने हैं। It was my birthday last week and I do not enjoy celebrating birthdays anymore क्योंकि would you guys agree, clap if you agree, birthday का ना चार्म चला जाता है when you get older, है ना? वो बात नहीं रहती है। When you are a kid, it's very special. It's horrible when you are a teenager. वो फेज बहुत मुश्किल होता है क्योंकि तुम अपने दोस्त से जाके पूछते हो कि आज मेरा बर्थडे, मेरे को तुम स्पेशल फील कराने के लिए क्या करने वाले हो? हम तेरी पीठ तोड़ देंगे, फुटबॉल के जूते निकालो, आज भाई को स्पेशल फील करना है। बर्थडे was such a special activity when you were a kid. Do you remember there used to be a master balloon? हर बर्थडे पार्टी में घर पे लोगों का एक मास्टर बलून लगता था। वो बलून जब फटता था तो उससे फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस पता चल जाता था, है ना? अगर उससे गिरती थी इंपोर्टेड टॉफीज तो सब समझ जाते थे ये बिजनेस क्लास बर्थडे पार्टी में मैं आया हूं, और सारे बच्चे कहते थे ये लिंडट क्या है। बट इफ योर डैड वर्कड इन अ बैंक एज अ क्लर्क तो उस बलून से गिरता था कलर्ड पेपर, और वो कलर्ड पेपर भी आपने खुद कलर करके कट करा हुआ होता था। बट या मैं जब भी लोगों को बताता हूँ कि आई थिंक करियर ग्रोथ में रुक गया है क्या है, तो द एवरीबडी लाइक सीनियर मैनेजमेंट हु इज हियर, वो मेरे से जानने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है कि आपका करियर रुका हुआ है। और उनको लगता है मैं कुछ ऐसा हैवी रीज़न बताऊंगा कि कोई ट्रॉमा है, कोई लाइफ में प्रॉब्लम अटकी हुई है। पता है कैसे सब रीज़न है कि काम पे क्यों नहीं फोकस कर पाते? क्योंकि दोपहर को नींद बहुत आती है, कि लंच बहुत हैवी कर लेते हैं, इसलिए 3 से 7:30 बजे तक काम नहीं हो पाता है। एंड वेन एवर आई टेल दिस टू पीपल they try to find a silver lining in this as well कि oh तो then you must be a night owl, आप रात को बहुत अच्छे से काम, डिनर भी तो हैवी कर लेते हैं तो कहाँ से हो जाएगा? Because I saw this podium being used for solving very difficult problems, I would like to tell you about a thing that happened in my colony which was solved in a very innovative manner, I must tell you. हमारी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही थी, ठीक है? तो सब लोग, सारे अंकल्स ने मीटिंग करी कॉलोनी के कि बताओ कितनी डिसऑनेस्टी बढ़ गई है, बताओ चोरी करके जा रहे हैं। मेरी मारुति 800 सेकंड हैंड चोरी कर ली, अभी कोई चोरी करने की गाड़ी है। फिर सब लोगों ने डिस्कस करा करना क्या है, तो एक अंकल ने बोला हम एक काम करते हैं, CCTV कैमराज लगा देते हैं, जो चोरी कर रहा होगा वो पकड़ा जाएगा। सबने कहा ओके ठीक है। तो उसका बजट निकाला गया और बजट आया 3.5 लाख कैमराज लगाने का।
तो सबने एक दूसरे की तरफ देखा और अग्री करा कि भाई इतने की तो चोरियां ही नहीं हो रही हैं जितने के कैमरा लग जाएंगे। तो हमारी कॉलोनी में एक अंकल ने एक बहुत इनोवेटिव सोल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि हम कैमरास क्यों लगा रहे हैं कॉलोनी में, हम बस एक बढ़िया सा बाहर डिजिटल बोर्ड लगा देते हैं कि दिस कॉलोनी इज सीसीटीवी कैमरा प्रोटेक्टेड। और मैं सोच रहा हूं अब कौन है डिसऑनेस्ट कि हम क्रिमिनल से ही ब्लफ करेंगे कि देखिए ट्रस्ट करता है तो चोरी मत करियो यार, ऐसी थोड़ी ना इतना डिजिटल बोर्ड लगाएंगे। बिकॉज दिस एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग। अब जब चोर हमारी कॉलोनी में आ रहे हैं तो वो ना गाड़ी ढूंढ रहे हैं ना ज्वेलरी ढूंढ रहे हैं, वो बस सब जगह कैमरा ही ढूंढे जा रहे हैं कि टोनी स्टार के मोहल्ले में आ गए हो क्या। दिस इज अ वेरी इनोवेटिव सोल्यूशन ना। एंड टू मेक इट सीम मोर ऑथेंटिक वो क्या करते थे, हर महीने कॉलोनी के बाहर एक ब्लर्ड फोटो लगा देते थे जिससे लगे कि हाँ ये इस महीने का ये चोर पकड़ा है तो तुम सावधान रहना। जिसमें उन्होंने 3 फोटोज अभी तक लगाई थी, वीरप्पन की, सद्दाम हुसैन की और थैनोस की। मैं कहा कुछ तो शर्म कर लो यार, है कह रहे ब्लर्ड फोटो है पता नहीं चल। मैं कहा पर्पल दिखाई दे रहा है आदमी वहां पे, थैनोस आएगा मारुति 800 चोरी करने सेकंड हैंड तुम्हारी। ओके दैट्स बीन माय टाइम गाइस, माय नेम इज चिराग, थैंक यू सो मच। That was hilarious. एक और बार जोरदार तालियां हो जाए for that lovely, lovely performance. Chirag, you stole the audience from me. Now I have to bring them back to this space and get back to the awards. Of मतलब ये बहुत ही मुश्किल टास्क है जो कि मुझे दे दिया गया है, लेकिन I will try my level best to maintain the level of it. So ladies and gentlemen, once again that was Chirag Panjwani for you. All right, let's move on to the next category of awards. In the previous editions, the CSR Journal received one of the highest applications from corporates across different sectors in the education and skill training category. This shows the importance and need of such a tool in moving towards an inclusive and just society. Many congratulations to our top 3 in education and skill training. I'm going to announce the names now. IndusInd Bank Limited for Prarambhik Bhasha Shikshan Karyakram, Early Language Learning in Haryana. Dabur India Limited for School Support Program, Adarsh Pathshala, Ek Nayi Pehel. Jindal Steel and Power for Asha the Hope, an initiative to empower Divyangjan. I'm honored to invite on stage our esteemed jurors for the education and skill training category. We have Mr. J.S. Saharia, IAS retired, former State Election Commissioner, Maharashtra, former Chief Secretary, Government of Maharashtra, and Chairman, International Society for Human Awakening and Development. Sir, can we please have you on stage? And along with you, I would also like to call on stage Mr. Amit Upadhyay once again. Thank you so much, Mr. Saharia and Mr. Amit, for joining me on stage. इससे पहले कि हम awards announce करें, Mr. Saharia, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ज़माना बदल गया है. We live in an age of media technology. Can we have a mic, please? We live in an age of media technology. ऐसे समय में भी, even though इतना advancement हो रहा है in digital learning and media, फिर भी, you know, there are places where we still at the same time lack basic teaching and learning aid in classrooms. तो आपको क्या लगता है किस तरह से एक बैलेंस बनाया जा सकता है between classroom learning and ed tech? Online education का भी ज़माना आ गया है, सब आगे बढ़ रहे हैं. How do we balance it? मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन और क्लासरूम एजुकेशन के जो इस समय कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट या सप्लीमेंट्री रोल जो है जी, last couple of years में ऑनलाइन टीचिंग has grown exponentially. Absolutely. And it has a direct impact on the classroom teaching. The classes and the teachers will have to improve their quality, they will have to improve their performance, and they will have to ensure a good, wholesome, quality education to the boys and girls. मैं जो देखता हूँ कि basic education will be available online और problem solving गुरु जिसे कहते हैं, जैसे अपने पुराने जमाने में था गुरु का जो संबंध है उसके लिए अच्छे एजुकेशनल सेटअप्स, maybe few in numbers, will emerge in the years to come.
Absolutely. Thank you so much for that enlightening response. And with this, if I may, I request you to please announce the second runner-up in the education and skill training category. Congratulations to IndusInd Bank Limited. Please join us on stage. Your efforts are much appreciated. Thank you so much and congratulations once again. Sir, can we please have the name for the first runner-up now? First runner-up is Dabur India Limited. All right then, congratulations to Dabur India Limited for securing the second place at the CSR Journal Excellence Award 2022 in Education and Skill Training. We have on stage representative from Dabur India Limited. Thank you so much and congratulations. Sir, पता तो चली गया है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप विनर का नाम अनाउंस जरूर करें. All right, it is my pleasure to invite on stage the winner for this year's CSR Journal Excellence Award in Education and Skill Training category, Jindal Steel and Power. Sir, before you leave the stage, आपसे मैं ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी on behalf of your organization. ऐसा क्या है जो कि आपका organization कर रहा है which sets your work and practices apart, especially when it comes to the CSR activities that you've been doing? Thank you. You have already announced that we have been awarded for Asa Devo. जी. As you know, life starts and ends with a hope. We all are living with a hope. We sleep in the night with the hope that we will get out. तो आशा भी होप का यही मीनिंग है, कोई पीछे ना रह जाए. क्या बात है? So inclusive education must be inclusive. And हमने ये देखा है, anything that has changed the civilization, right from forest economy to agriculture economy, agriculture to industrial economy to digital service economy to digital economy, wherever we are to robotic to artificial intelligence. What has really changed the civilization is skill and education. But skill and education का इस दौड़ में कोई पीछे रह जाता है, वो मेरा दिव्यांगजन भाई, तो उन लोग पीछे ना रह जाए. यही है आसानी हो. आज 5000 बच्चों जो है हमारा साथ है, वो हमारे बच्चे हैं. और उस बच्चों का जिंदगी को बदलना है. They have to face the life in their full strength. Just अब सोचा एक चीज मैं आपको पूछता हूँ. जो बच्चा का डिसेबिलिटी है, जब तक उसका पेरेंट्स जिंदा है, till the time that parents are alive, there is somebody to hold their hand. But then, beyond that, what happens to them? What's going to happen to them? What is the social security system? What country is offering them? What we are giving to them? What we are giving to them, but Jindal Steel and Power and JST Foundation is giving to them is that they are standing on their own legs and they are facing life with their full strength. They are skilled, they are employed, they are issued the certificate, and they are one of the nation builders who are contributing to the nation's growth. That is very humble way. बहुत खूब. कोई पीछे नहीं रहता. This is called inclusive education. Awesome. क्या बात है सर, क्या बात है. No wonder इस कैटेगरी के आप विनर है. Thank you so much and congratulations. Thank you so much Saharia ji for joining us. Thank you so much Amit. Thank you so much. Before leaving, I will place my gratitude to Dr. Bhaskar Chatterjee, who has really held my hand right from the beginning of my career in, right from NABARD to Manipur, India to Vedanta and here, wherever I am. He is the person who has been holding my hand. That is so sweet. Thank you so much, sir.
Before we move on to the next category, I would also like to thank the other two jurors who could not be here this evening with us as of now. Mr. Ranjit Singh Disale and Mr. Abhay Oja, thank you so much for contributing to this category. And now it is time that we move forward with the Agriculture and Rural Development category for the CSR Journal Excellence Awards 2022. The category of Agriculture and Rural Development and Environment claimed for a huge shift of focus, and it was answered. Many congratulations to our top three in Agriculture and Rural Development. First up, Naira Energy Limited for Gram Samruddhi, Grasim Industries Limited, a flagship company of Aditya Birla Group, for ensuring sustainable livelihoods through best practices. SBI Foundation for SBI Youth for India Fellowship Program. With this, I'm pleased to invite on stage our three esteemed jurors for the Agriculture and Rural Development category. Professor Surinder Singh Jodhka of the Jawaharlal Nehru University, recipient of the ICSSR Amartya Sen Award for Distinguished Social Scientists. Sumit Kumar, IRS Commissioner, Income Tax, Kanpur. Vishwanath Giriraj, IAS retired, former Chairman, 5th State Finance Commission, Maharashtra, and current Chief Executive Officer, Maharashtra Bamboo Promotion Foundation. Can we have you all on stage, please? Thank you so much for joining us. इससे पहले कि हम एक्चुअली अवार्ड्स अनाउंस करें, कॉमन सवाल है जो कि मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूँगी कि अगर हम विमेन की बात करें तो फ्यूचर में क्या है औरतों के लिए इन रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर? क्या विजन है जो कि आपको लगता है हमारे देश का है? कुछ बता सकते हैं अगर आप? To reduce the poverty, to give a better life to the bottom 30 or 40% of our society. This is what I thought, rural development. And it should not be a top-down approach. It should be a bottom-up approach where people can participate in the development process. This is what I think as rural development. Thank you. Wonderful. Please, John. I think the question of women has become very, very critical because lots of men are moving out of agriculture. They become laborers, they come to cities, and agriculture is increasingly being done by women. Wow. So we need to also focus on women, but this is also a sign of their decline, not necessarily of the empowerment. It's because families have become poorer, that men are going out and women are kind of then left with the small plots of land. So situation is very complicated. It's not something to celebrate, but we have to look at this whole process of feminization, defeminization as development challenges. And of course, I mean, women have to be equal and they're very smart. They're also moving out. They're also getting education. All those things are happening. But I think we should recognize the situation is very, very complicated. So thank you so much for that perspective actually. बताइए सर, कुछ अगर आप ऐड करना चाहें. एक चीज़ मैंने महसूस किया है कि सबसे बड़ी बात है कि गांव में महिलाओं के पास ज़मीन जो विरासत में मिलता है वो उन्हें नहीं मिलता है. तो इस दिशा में एक चीज़ मैंने महसूस किया है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टाम्प ड्यूटी में जो महिलाओं के लिए जो छूट मिलती है उसकी वजह से लोग आकर्षित होते हैं महिलाओं के नाम ज़मीन खरीदने के लिए जो स्टाम्प ड्यूटी बचती है. ये एक शुरुआती बिंदु है जहाँ से ओनरशिप आती है, क्योंकि जब तक से संपत्ति नहीं महिलाओं के हाथ में आएगी, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, वो महिला सशक्तिकरण बिना आर्थिक सशक्तिकरण के संभव नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, मैं देखता हूँ कि जो महिलाएं हैं घर में काम करती हैं, जैसे गांव की भी बात करें, शहरों में भी वही चीज़ होता है, तो उनके जो श्रम है, जो उनके लेबर हैं, उसका आर्थिक तौर पर आकलन नहीं हो पाता है, न कि समाज के द्वारा न परिवार के द्वारा. तो इस वजह से जो चीज़ें हैं, महिलाओं की जो है आर्थिक कमजोरी जब तक से दूर नहीं हो पाएगी तब तक से वो अपना स्थान समाज और घर में बना नहीं पाएंगे. तो मेरा मानना है कि इस दिशा में हम लोगों का जो काम है सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं जो CSR के थ्रू करना चाहते हैं, इस बात पर विशेष ध्यान दें कि महिलाओं की सहभागिता हो, क्योंकि सहभागिता तो है लेकिन उनका श्रेय नहीं मिल पाता है. मुझे ऐसा लगता है, जो भी मेरी थोड़ी बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि है, मैंने ये महसूस किया है. थैंक यू.
थैंक यू सो मच। और आपने बहुत ही अच्छा कहा कि विमेन एम्पावर तभी तक हम कर पाएंगे हमारे देश के विमेन को एम्पावर जब उनका फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होगा. सो वेरी राइटली सेड. विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर द एनलाइटनिंग रिस्पॉन्स यू गेव टू माई क्वेश्चन. If I may, I would request you to please announce the second runner-up in the agriculture and rural development category. The second runner-up is Nayara Energy Limited. Perfect. Congratulations to Naira Energy Limited. Making your way to the stage. Congratulations. Sir, can we have the name for the first runner-up, please? Grasim Industries Limited. Many congratulations to Grasim Industries Limited, a flagship company of Aditya Birla Group, for securing the second place at the CSR Journal Excellence Award 2022 in Agriculture and Rural Development. We have our first runner-up on stage to receive the award, Grasim Industries Limited. Thank you so much and congratulations, sir. वैसे तो winner clear है, लेकिन we would still love if you would do the honors. SBI Foundation. All right, it is my pleasure to invite on stage the winner for CSR Journal Excellence Award in Agriculture and Rural Development category, SBI Foundation. You know, before you actually leave, we have a question for you, as you expected. आपसे भी जानना चाहेंगे, as a corporate organization doing CSR, Mike, please देंगे. क्या सबसे बड़ा challenge है जो कि आप लोग face करते हैं in the rural development and agriculture sector? क्या है जो कि आपको लगता है कि यहाँ पे जाकर के आप अटक जाते हैं, ये मुश्किल पड़ता है आपको? Resistance or something else, please tell me. Sure. So we are the CSR arm of SBI. And we serve towards rural development, and that is our commitment to service beyond banking. And our main motivation is to reach each remote location possible and reach the most underserved parts of the country. So reaching those locations where we do not have the basic facilities even. So that is one of the challenge, to reach there and identify the need of the community and then work together with them for finding sustainable solutions for them. You know, I have huge respect for the work that you do. It actually is very difficult. My mother is a social worker and she works in rural areas, so I know personally how difficult it is, but I am sure it is also equally rewarding. I have seen जब लोगों के लिए हम कुछ काम करते हैं in the rural sector, the way they, you know, accept you and welcome you is phenomenal. So congratulations for the work that you do, and thank you so much for joining me on stage. Thank you, congratulations. Thank you for recognizing our commitment. Thank you. Thank you, jurors. I want to say something. Yes, sir, please. See, this SBI Youth for India Fellowship, which has won the award, every year the number of applicants is about 70,000. Wow. And they choose about 75 for this. I was quite amazed at the number of applicants for this fellowship. It is creating a dedicated cadre for rural development. So, and these people themselves go to start new organizations. Right. I thought it was very unique and I should share with you. Thank you. Maybe other corporates can also imitate their model. Oh, bilkul, bilkul. Actually, that is the whole reason. The agenda is this only, that we can inspire so many more people. All right. With this, ladies and gentlemen, we now move on to a very special segment of this event. We have our first special award for the evening.
The award is for that personality who has the strength to translate a vision into a reality by knowing the way, going at it, and showing it. This platform is talking about a gentleman called Shri Sudhir Mugantiwar, who has been recognized as a leader of great repute. Chaliye, allow me to narrate an interesting story to you guys. So there was a boy who was born in the Chandrapur district of Vidarbha. Starting at just 17, he contested the union elections in the college and started his public life. He struggled hard for over 4 decades by dedicating his life's work to the development and betterment of the people of Chandrapur and Maharashtra. Now, that young boy, after sacrifices and persistence, has successfully pushed for focusing on issues of employment, entrepreneurship, higher education, reforms to improve budgetary allocations in crucial health and family welfare schemes of the marginalized groups. And that is why today we are honored to announce the CSR Journal Award for Excellence in Future Leadership 2022, which is conferred upon Shri Sudhir Mugantiwar, Minister of Forest, Cultural Affairs and Fisheries, Government of Maharashtra. All right, ladies and gentlemen, okay, unfortunately, Shri Mugantiwar could not join us this evening, but his continued commitment to build resilient communities is highly appreciated by the CSR Journal. In his absence, we would like to call upon Mr. Ravindra Singh to please accept the award on his behalf, and I would also request Mr. Amit Upadhyay to please come on stage and give away the award. चलिए यहाँ आ नहीं पाए तो क्या हुआ, एक बार जोरदार तालियां जरूर हो जानी चाहिए श्री सुधीर जी के लिए. And thank you so much for receiving the award on his behalf. Thank you so very much, Mr. Ravindra Singh. Okay, we now move forward with announcement of the CSR Journal. समाज के ऐसे समूह हैं जो आज भी मुख्य धारा में नहीं ला सकते, तो हमारा ये सामाजिक दायित्व होता है कि उनके बेनिफिट के लिए काम मैक्सिमम हम लोगों का कारपेट यूरोप कंट्री में जाता है जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है. कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है जो कि अपने आप में और सबसे लाभदायक और सबसे हेल्पफुल और सबसे नीडफुल चीज़ें हैं. डिजिटल आंगनबाड़ी हो गई तो सब ऐसे अच्छी नज़र से देख रहे. सेवा ये मेरा धीर है. All right then, we now move forward with announcement of the CSR Journal Excellence Awards 2022 in the Health and Sanitation category. Many congratulations to our top 3 in Health and Sanitation. We have GAIL India Limited, Arogya, PVR Limited, Safe Centers Program, Gland Pharma Limited and its CSR wing, Gland Fossen Foundation, a public charitable trust of Gland Pharma Limited, Health Plan for Socio-Economically Challenged Children. With this, I also take an opportunity to now invite on stage our 3 esteemed jurors for the Health and Sanitation category. Dr. Bhaskar Chatterjee, IAS retired, former Director General and CEO, Indian Institute of Corporate Affairs, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi. Ajit Kumar Jain, IAS retired, former State Information Commissioner, Maharashtra, former Additional Chief Secretary, Government of Maharashtra, and current Chairman and Managing Director, Environmental Research Foundation. Dr. Rajendra Bharud, IAS Commissioner, Tribal Research and Training Institute, Pune, Maharashtra.
Thank you so much, gentlemen, for joining me on stage. इससे पहले कि हम ये अवार्ड्स को अनाउंस करें, एक ऐसा सवाल जो कि मुझे लगता है बहुत ही कॉमन सवाल होगा जिसको कि आप बहुत बार आंसर करते होंगे, वो यही है कि ये जो चैलेंज है ऑफ अर्बन रूरल डिफरेंस इन हेल्थ एंड वॉश सैनिटेशन, ये कैसे इवॉल्व हो रहा है, इस चैलेंज को कैसे ओवरकम कर रहे हैं, आप कुछ अगर बताएंगे. A very good question and not always easy to answer. One of the challenges we faced is this कि डॉक्टर्स की पढ़ाई ज़्यादातर सिटीज़ में होता है और इन लोगों को जब भी रूरल पोस्टिंग मिलता है तो बहुत कम ऐसे डॉक्टर हैं जो रूरल पोस्टिंग पे जाते हैं, जाते भी हैं तो टिकते नहीं. So to get good quality doctors actually working in rural areas needs a special kind of program. In government, I'm sure you've also seen that we try and incentivize these postings so that good quality doctors go there. That's part one. Part two is, how do you give quality health services in rural areas? And one of the programs that we do in the Vedanta group is this, that we go to the district hospital and we ask the CMO, government is giving you a lot. What can we give you to give that last mile connectivity? So CSR, and this question was raised again in the morning, how do you connect to government schemes? And the idea is that you complement and supplement what government is doing. You don't duplicate it. So you try and fill up the gaps, try and assist government in government schemes wherever that is possible. In continuation with this topic, in Nandurbar I remember we have Sardar Sarovar project, and in backwater of Sardar Sarovar project there's a huge water. So a lot of tribal hamlets, they are living in different corners. So through one CSR agency we got speedboat, and the doctor teams, they are staying on that speedboat for a week. So they don't go to land like a Pirates of Caribbean. They stay on that boat only for continuously for 1 week. They just go to the near the village, give the treatment, again come back to the boat and stay there for 1 week. So that kind of CSR funding is, getting helped in remote tribal districts, and it's really amazing to see so many people are coming forward. Thanks a lot for everybody. I'll agree that there's a dichotomy as far as health and sanitation in urban and rural area is concerned. We have, say, urban population about 5-6 major cities and towns in the country, but the rural population is scattered over to nearly 20 lakh habitations all over the country. The government has taken several steps, several campaigns have been launched in order to improve, in particular, the sanitation. And I'm sure gradually, as far as the rural sanitation is concerned, it's improving. But when it comes to health, I'll agree with what Dr. Chatterjee said. The kind of health services or kind of referrals which urban areas have, they are missing in the rural sector. And therefore, the role of the corporates is extremely important through CSR or otherwise to fill up the gap. So I think that is how I'll put it. Thank you so much. Thank you. That was actually quite insightful. All right, with this, if I may, I would request you to please announce the second runner-up in the health and sanitation category. I am utterly delighted to announce the second runner-up, which is Gland Pharma Limited. Please come on stage, and it's CSR Wing Gland for Sun Foundation. Congratulations to Gland Pharma Limited and its CSR Wing, Gland for Sun Foundation, a public charitable trust of Gland Pharma Limited. I'll just hold this.
Thank you so much and congratulations once again. Sir, can we have the name for the second runner-up, please? Second runner-up. No, actually first runner-up. Second runner-up to abhi humne diya. That's First right. runner-up, All right. yes. I would like So to correct first that. runner-up, very proud to announce as ex-Secretary for Public Sector Enterprises as well, GAIL India Limited. Gas Authority of India, please come on stage. Congratulations to GAIL India Limited for securing the second place at the CSR Journal Excellence Award 2022 in the Health and Sanitation category. Your efforts have been well received, Just stay put. and thank you so much for the same. Thank you so much and congratulations. Sir, अब formality है लेकिन please announce तो करना पड़ेगा winner का नाम please बताइए. So, gives me tremendous amount of happiness and delight to announce the winner, PVR Limited. All right then, ladies and gentlemen, it is my pleasure to invite on stage the winner for this year's CSR Journal Excellence Award in Health and Sanitation category, PVR Limited. Hi, am delighted. honored to be in front You of gave you, such sir. a Pleasure, sir. आपसे हम एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे before you move off the stage कि इतना सब कुछ आपने already किया है बीते इस साल में, that is why you are the winner of this award, but then is there any area that you still want to focus on? कुछ है जो कि आपके pipeline में है? क्या है future? What does future hold for CSR projects from PVR? Absolutely. It's an honor to be here. 2006, the company got listed here, PVR Cinemas PVR Limited. And we only and only invested on safety and protection right from the time. I was hired, and Bhaskar sir knows, way back in 2006 when there was no policy, there was no program, and there was no compliance. So it's absolutely pleasure for PVR brand to keep investing on safety and protection. And the vision probably would be to continue doing what we're doing, because that itself is a big social impact. Continue with pink centers, which we run with governments, and Garima Greh, which we want to run with different states in in the other parts of India. So thank you so much. I think this is just an absolute pleasure to be here. Thank you so much and congratulations to you once again. And thank you all the jurors for joining me on stage. It was much appreciated. All right, moving on. In today's age of media and technology, most of us live our daily lives in front of screens and consume most of our information through them. In leveraging the power of media and tech, the CSR Journal TV is now available on Andromeda. It gives me immense joy and pleasure to present to you a first of its kind end-to-end integrated OTT platform, Andromeda. All your OTT apps with just one login. I'm pleased to announce that the CSR Journal TV will now be available to all subscribers of Andromeda across India and can be streamed live. We have a short demo for you, so can I please have the AV on screen?
All right, so looking forward to all of you joining us even on Andromeda now. But you know, with this, we have such an amazing bunch of people, audience this evening, you know, here, joining the CSR Excellence Awards. So I thought क्यों ना एक ऐसा डिस्कशन किया जाए जिसकी बहुत ज़रूरत है आज के इस ज़माने में, in today's day and age. It is very, very important to talk about women empowerment, and इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए I would like to call on stage Ms. Reena Jha Tripathi and Ms. Nidhi Chaudhary. Can we have you on stage, please? Do we have Ms. Reena Jha Tripathi and Ms. Nidhi Chaudhary here? Have they stepped out for a bit? All right, हम फिर से बुलाएंगे. It's okay, let them take their time. Okay. Thank you, ma'am, for joining me on stage. Actually, can we have a mic? मैं विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रही थी और एक ऐसा सवाल जो कि पूछना बनता ही है, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट CSR एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स, इसकी आज की तारीख में भी हम साल 2023 में हैं, लेकिन फिर भी वो क्या चैलेंजेस हैं, वो क्या रोड ब्लॉक्स हैं जो कि आपको लगता है कि अभी भी कंपनीज फेस कर रही हैं, आप फेस कर रहे हैं? प्लीज़ बताइए कुछ. A very good question indeed. See, over the years, women have changed, but men haven't. And the first thing for women empowerment is that men need to change. Other thing that they should understand, that empowerment of women does not mean fall of men. So, the day we understand this whole conflict of empowerment will go. Yes, निधि चौधरी जी, मेरा सवाल जो कि मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी वो यही था कि हम इतना आगे आ गए हैं, साल 2023 में है, हम मुंबई में रहते हैं तो हमें ज़रूर ऐसा लगता है कि यू नो सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ गई है, एंड देयर आर एडवांसमेंट्स एंड प्रोग्रेस दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन द सेक्टर इन द फील्ड ऑफ women empowerment. But still I'm sure there are roadblocks, there are challenges that you are facing which you can tell us about. कहाँ जाकर के गाड़ी अटक जाती है आज भी? I'm 100% sure that most of us know that there is a divide in India, which we witness in India and Bharat, which has been spoken by a lot of speakers, and that divide is what stops a lot of women who are there in rural India, a lot of women in tribal India. There are societal barriers which we cannot say do not exist. I would even say that even in urban India, even in corporate sector, it is not easy for women. It's a result of hundreds and hundreds and hundreds of years of socialization, which need to change and which will change over a period of time. As ma'am said, it's not about we trying to tell you that men are the obstacles. It's not also that the women are the obstacles. Somewhere it is there in mindsets which need to change, wherein we have to bring in that belief that each of us are capable of achieving our true potential. And it is not going to happen in a day. It is not going to happen just by having female prime ministers, female chief ministers, female collectors. It will come over a long period. It is not going to happen over a decade by bringing some legislations. We have enough of them. We need to bring change in mindset, even in corporate sector, even in government sector, even in our families. When we bring up our children, are we bringing them up as equals? When that start happening, the societies change, the countries change, and with that will come the empowerment. Absolutely. Mental capabilities को enough power dena of women is something that I think should be our agenda for 2023, but that's my viewpoint. You tell me, what is the most important area where focus डालना बहुत ज़रूरी है in the year 2023 now? When it comes to women education, because that's one thing which I believe every one of us believe that when a girl gets educated,
It's the entire family that gets educated. And when the girl stands on her own feet, becomes empowered, it actually changes the entire community to which she comes from. So it is education and education and education which is going to change the face of Indian women, women all across the countries. और जैसा पहले सवाल के जवाब में रीना जी ने कहा कि not just education of women but also educating the men, that you have to educate women and give them the power to empower themselves. You also tell me क्या होना चाहिए the main agenda of 2023. The first thing, it should be women should support women. Wow. Like at home you see, most often than not, it is women who are not supporting. From the time a daughter is born, they only want to get her married. Let me tell you about myself. I come from all boys family, the only daughter. And the day I was born, my grandmother decided to, I guess, get me married on the same day. So I tell everybody, I was only groomed to get married. Everything else is a bonus in life. So the first and foremost thing is that women need to support women. I got utmost support from the men, whether in my family, in my profession. So women need to support women. And the day we start doing it, I am sure things are going to change. We talk about, as Nidhi spoke about the divide, most often than not, that divide is perpetrated by women only. So that mindset needs to change. And culturally also we are so this thing that men carry forward the lineage. We have to understand that the lineage is no big deal. Even women can do that. And the day it is all in the mindset. And the day we come to understand this, that women are equal partners, they will look after their parents well, they will look after everybody well, this question will not arise. And in 2023, the International Women's Day is about to come, and the motto for this year is embrace equity. So from the stage I am saying that we do not embrace equity only in words, we embrace equity in our minds, in our action and in our thoughts. क्या बात है, this is beautiful. लास्ट सवाल निधि जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि रीना जी ने बताया इनके परिवार के बारे में एंड हाउ जनरेशन के बाद में ये चेंज है, बदलाव है जो कि उनके खानदान में आ गया है. हाउ अबाउट योर फैमिली सेटअप, बिकॉज यू हैव सच प्रोग्रेसिव थॉट्स, टेल अस अ लिटिल अबाउट दैट. हाउ जेंडर न्यूट्रल इज इट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. I was born in a village called Kathauti in Jail Tehsil of Nagaur district in Rajasthan. Now that's a long thing to tell, but most of the villages in India are like that. Rajasthan, as we all know, that the gender gap in education and even employment was maximum as per 2011 census. When I was brought up, marriage, as for madam, that was the only thing, only goal before me. All my cousins, in fact, had child marriage. And so for me also, when I completed my 10th standard, 12th standard, marriage, that was the only thing that was put forth before us. But parents supported, they actually resisted all the proposals that were coming from my relatives, from friends, their friends, sometimes from influential people. My father would get transferred on rejecting a proposal coming from an influential person in our district. And but I can confidently tell you that if you have a support system and you have that zeal and the drive to keep going, keep striving for your dreams, any girl, anywhere can do it. And most of us, I'm sure ma'am is here and the other girls who are here, they have their own stories to tell. And this was not easy, this was difficult, this has always been difficult. This is the way it is for all the women who make their name or who come up on their own in such transitional phases.
because our country is still in transition. It is still a nation in making, a country in making, a developing country. So in such cases, our stories will have to be that kind of a story wherein the girl actually had to go through a lot in terms of thick and thin of life, in terms of struggles, to just get educated, to just get on her own feet. But having said so, the story is not all grim. There are a lot of changes that are happening in Rajasthan. There are a lot of changes that are happening all across the country. A lot of girls are making their name in sports, in corporate sector, in banking, finance, bureaucracy. I am hoping that this is 75th year of our independence. While I strongly believe that the independence is incomplete for women, it is going to be a much better scenario in 2047 when we will be celebrating 100th year of our independence. Wow. With those wishes, I would like to conclude. Thank you. Thank you so much for joining me on stage and for such insightful and enlightening words, both of you. You know, मैंने एक पोएम लिखी थी जो बड़ी फेमस हुई थी, मुझे बेटी ही रहने दो. उसमें मैंने कहा था कि nobody is going to change your life by making you a wife. So that is something that I think we should remember, and we should just get up and change our own lives now. So 2023 is about equal partnership, as you rightly said. Thank you so very much for joining me on stage. It was beautiful. Thank you. Ladies and gentlemen, Reena Jha Tripathi ji and Nidhi Chaudhary ji. Thank you. हम CSR Journal Excellence Awards की बात कर रहे हैं, हम CSR Initiatives की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं अगले बुलाना चाहूँगी on stage Dr. Bhaskar Chatterjee को, so that we can hear from him on his imagined vision of CSR, जो उन्होंने पिछले 10 सालों में सोचा था और किस तरह से वो आज की तारीख में पनपता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है. तो Dr. Bhaskar Chatterjee, can we have you back on stage, please? Also, along with this, I would also like to inform you guys that our Honorable Chief Minister is on his way, and Mr. Eknath Shinde is going to be here any moment. Yes. Can we have the mic, please? तो सर, जैसा मैं कह रही थी कि क्या आपने सोचा था किस तरह से ये फील्ड आगे बढ़ेगी और किस तरह से अब कॉर्पोरेट्स इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ले रहे हैं, आपको किस तरह से ये आगे फलता फूलता हुआ दिख रहा है? Please tell me a little about it. See, CSR as a concept is age-old, whether it's in India or anywhere on the planet. But I would call that kind of CSR more like philanthropy, okay, as it used to be. The dawn of modern CSR, which I call strategic CSR, actually comes to India in our own public sector from the 1st of April 2010, when the first ever guidelines, and people from GAIL, etc. would remember, were prepared by the Department of Public Enterprises for just the public sector. So in a way, CSR charity began at home. We did it in the government first. After that, of course, and we now know the Companies Act was at that time still on the table, being drafted. In that Companies Act, there are 470 sections. I remember the Secretary Corporate Affairs calling me up and he's saying, you know, Bhaskar Saab, you've drafted this guidelines for public sector. But if you wanted to do it for corporate entities, guidelines will not do. It has to be legislation. And that is how Section 135 of the Companies Act came to be drafted. And that is how CSR got mandated in this country. Now we are into our 9th year. 1st of April 2014 is when modern CSR began for corporate entities. What have we seen in these 8 years? Just 2 or 3 points I'd like to make, not take a lot of time. One is, today CSR has become literally a sector, an industry. From just being something that was feel good,
intermittent, off and on. The best minds of the country are now engaged in CSR. One of the reasons, one of the real things which moved the needle was that all decisions on CSR are now taken in the board. The CSR committee of the board is personally liable. All the 3 members of the CSR committee are personally liable, subject to heavy fines for the way that CSR is implemented. So in a sense, decisions have reached board level. The best minds of the company are engaged in assessing what CSR should be done by the company. The second is that the gap between the civil society sector and the corporate sector has largely been bridged. It is only when civil society, the NGOs which implement, and corporate which funds and monitors, it is when that divide is bridged that real CSR happens in the field. That's the second big development. And the third today is that more and more companies are looking at outcomes, looking at the impact that's being created on the ground. Are beneficiaries really getting what is intended by the program? So the project mode, focus on beneficiaries, focus on real impact, is what today distinguishes modern CSR from what used to be. That's the differentiation. And I think the way forward will be exactly in this direction. Can we make our CSR efforts more strategic, more focused, more outcome oriented, and really make a difference on the field? Can we do that? That is where the challenge lies. Thank you so much, sir. I think आज की शाम में मैं दूसरी बार आपको बात करते हुए सुन रही हूँ, and it is such an honor, and I must tell you, you are a delight to be on stage, you know, to have you on stage. Thank you so much. Ladies and gentlemen, Dr. Bhaskar Chatterjee. All right, you know, अब जैसा डॉक्टर भास्कर चैटर्जी भी बता रहे थे कि 10 साल पहले जो उनका विजन था वो आज की तारीख में वो सच होते हुए देख रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में जो हमारे कल को डिफाइन कर रहे हैं वो है हमारी यंगर जनरेशन, द यूथ ऑफ द कंट्री। और हमारी यूथ को जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आज की तारीख में, चलिए उनके बारे में भी थोड़ी यहाँ पर बात करते हैं। You know, that one way, that short way that we can grab their attention of the youth is by social media now. और आज की तारीख में वही अपील जो कि यंगर ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी के साथ में जो हैं, उनका नाम है खान सर, जो कि आज हमारे साथ में यहाँ पर आए हुए हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एंड प्लीज़ आइए सर, मुझे स्टेज पर ज्वाइन कीजिए। आपको सर कहने में मुझे लग रहा है कि मैं आपका नाम ही बोल रही हूँ अब। इट इज़ बिकम सिनोनिमस टू योर नेम नाउ। थैंक यू। आइए प्लीज। थैंक यू मैम। सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि घर पर भी अब आपके सारे रिश्तेदार आपको खान सर बोलने लगे हैं, आपका नाम बन गया है वो? हाँ, अब लगभग सब लोग यही नाम से बुलाने लगे हैं। मेरे साथ में भी ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के फ़ोन में, बिकॉज मैं रंगीली रुचि के नाम से रेडियो पर हूँ, तो रुचि नहीं रंगीली लिखा होता है। तो मेरे साथ में ये एक घटना हो गई, लेकिन आपके साथ में तो एक अच्छी बात हो गई है कि लोग आपको सर बुलाते हैं। कभी कभी हम लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लोग प्रोफेशनल लाइफ की वजह से ही जानने लगते हैं। बिल्कुल, तो वही हम लोग के साथ भी वही है। आपसे क्या सवाल पूछूं मैं? मतलब आप सबसे सवाल पूछते आए हैं, मुझे यहाँ पर थोड़ी शर्म आ रही है आपसे सवाल पूछने में। सवाल आपको पूछना है, आप हमसे कहिएगा कि हम क्या सवाल पूछे। हम लोग तो एक एजुकेशन के सेक्टर से थे जी। और जब हम लोग इसकी शुरुआत किए थे एजुकेशन में, तो हमें नहीं लगा था कि इतना एजुकेशन को हम लोग वर्ल्ड लेवल तक ले जा सकते थे जी। कहीं ना कहीं हमें भी इस चीज का दुख लगता था कि हमारी जो भारत का कल्चर था, हमारी जो संस्कृति थी, हमें विश्व गुरु कहा जाता था। दुनिया से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आया करते थे। आज भारत से लोग जा रहे हैं। एक हमारा सपना है, पता नहीं कब ये पूरा होगा, कि बाहर से भी लोग यहाँ पढ़ने आएंगे और हम इस जन्म में इस सपने को पूरा होते देखकर ही जाएंगे। क्या बात है।
लेकिन कुछ ना बहुत ही पिक्यूलर चीज़ें होती है जो कि टीचर्स करते हैं जो एक क्लासरूम में होती है, जैसे कि आज की तारीख में अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे ज़माने में तो चौक सीधा आगे से फेंक करके जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर निशानेबाजी लगाई जाती थी या फिर गेट आउट ऑफ द क्लास हो जाता था, या फिर नील डाउन होता था, या फिर मुर्गा बनाया जाता था, या फिर हैंड्स अप कर दिया जाता था। तो आप ये सब मिस करते हैं क्या व्हाइल यू टेक क्लास? नहीं, ये तब होती है जब क्लास बोरिंग हो जाती है तब। हाँ। तो हम लोग पूरी कोशिश रहती है कि क्लास में कभी बोरिंग फील ना हो। तो हम अपने टीचर्स के ग्रुप में भी एक बात ये आ रहा है, उसको भी आप इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ाएं कि वो भी बोर ना हो, उसको भी समझ में आ जाए। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और हम टीचर्स को भी यही कहते हैं कि जिस तरह से एक फिल्म डायरेक्टर मेहनत करता है 2 घंटे की फिल्म के लिए 2 साल, आप भी 1 घंटे के क्लास के लिए 5 घंटे मेहनत कीजिए, कोई लड़का नहीं सोएगा। और हम तो लड़कों को भी यही कहते हैं कि हम पढ़ाते हैं, तुम्हारे में दम है तो भूल के दिखाओ। वाह क्या बात है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि YouTube जिसके जरिए आप एक्चुअली मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुंच पा रहे हैं, YouTube एक शिक्षा का माध्यम इन इंडिया, ये जो एक टॉपिक है इसको अगर आप थोड़ा सा इलैबोरेट कर पाएंगे सो दैट पीपल ऑल्सो नो, जो कि आज तक शायद आपकी क्लासरूम का हिस्सा नहीं बन पाए, उन्हें पता चले कि क्या किस लेवल का इम्पैक्ट है जो कि आपने भारत में जो विद्यार्थी हैं उनके ऊपर बनाया है। YouTube एक शिक्षा का माध्यम। देखिए, पहले एजुकेशन, अभी क्या हो गया, एजुकेशन एडटेक हो चुका है। एडटेक इन द सेंस एजुकेशन के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी को भी लाना पड़ेगा। अब शुरुआत में हम लोग भी इसको एडॉप्ट नहीं कर पाए थे। 2019 के टाइम पे जब हमें कहा गया कि अब थोड़ा सा ऑनलाइन बताया जाए, तो चूंकि हमारा पटना में हम एक सेंट्रिक थे, वहां पे सबसे बड़ा क्लासरूम था, तो हमें लगता था कि लड़कों को हम यही पढ़ा रहे हैं। लेकिन उस समय जिन लड़कों को जगह नहीं मिलती थी तो कुछ खड़े रहते थे, जिन्हें नहीं मिल पाती थी वो घर लौटते थे। बाद में जब कोरोना आया तो मजबूरी में हमको आना पड़ा यहाँ पर, और कोई रास्ता ही नहीं बचा वहाँ पे। तो हम तो जैसे पहले पढ़ाते थे वैसे अभी भी पढ़ाते हैं, लेकिन पहले क्या था, एक क्लासरूम तक लिमिटेड थे, और अभी क्या है, यूट्यूब के माध्यम से हर जगह कोई भी देख सकता है। तो इससे कई फायदे भी हुए और कई नुकसान भी, मतलब फायदे ज्यादा हैं। अब जो पढ़ने वाला है वो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचता है, इससे ज्यादा फायदा स्टूडेंट्स को है। पहले क्या था, छोटे से क्लासरूम में टीचर्स उतना सिंसियर भी नहीं रहते थे, अरे 100 लड़के बैठे हैं क्या दिक्कत है, अभी पूरी दुनिया देख रही है। और यही नहीं, जिंदगी भर वही रहेगा यहाँ पे, अगर कुछ भी अगर गड़बड़ निकला तो फिर तो पूरी व्यवस्था कर देगा। तो पहले के तुलना में पढ़ाई अब टीचर्स के लिए भी और मेहनत है, क्योंकि पहले तैयार करके आना है, पहले बोर्ड में ऐसे बना देते थे, अभी क्या है, स्क्रीन लगी रहती है, तो उस स्क्रीन पर क्या पीपीटी चलेगा, किस तरह के इमेजेज रहेंगे, वो पहले से लोड करने रहते हैं। तो ये लड़कों के लिए तो और बेनिफिशियल है। और यूट्यूब की एक खराबी है एजुकेशन के खास तौर पे, यहाँ की सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन सबके पास है, कोई भी देख सकता है, कंपेयर कर सकता है किसी और से। तो जब तक हम यूनिक नहीं देंगे, सबसे बेस्ट नहीं देंगे, तब तक वो चीजें लड़कों को अच्छी नहीं लगेगी। और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि कोई भी टॉपिक पे अगर कोई क्लास हमारा देख रहा है, जैसे लेट सपोज अभी यूक्रेन और ये रसिया चल रहा है यहाँ पे, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उस क्लास को देखने के बाद उसके पास कोई डाउट ना रहे। इट मीन्स कि उस एक बार लेक्चर देख लिया तो उसका पूरा का पूरा सिस्टम पूरी समझ में आ जाना चाहिए। तो यूट्यूब भी एक अच्छा माध्यम है। इसकी एक और सबसे बड़ी खासियत ये है कि सारे लड़कों को शहर में बड़े सेंटर्स पे पैसे की कमी से नहीं बुला के पढ़ाया जा सकता। आज भी गरीबी की वजह से पढ़ाई छूट रही थी, तो ऑनलाइन में ये हुआ कि एक बार सेटअप कॉस्ट है, उस पे कितने लड़के पढ़ेंगे ये कोई लिमिट नहीं है। तो इससे क्या हुआ ना कि हम क्वालिटी एजुकेशन एकदम सस्ते में पहुंचा सकते हैं। हम 6 महीने का कोर्स 200 रुपए में पूरे गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं। और पहले कहा जाता था गवर्नमेंट 100 रुपए देती है तो पब्लिक तक कितना पहुंच पाता है, 15 रुपए की 30 रुपए कितना पहुंच पाता है। लेकिन उतना हम इतना कहते हैं कि हम लोग जितना पढ़ाते हैं उसका 100% गांव के अंतिम छोर तक पहुंचता है, जहां सड़क नहीं पहुंची है वहां भी एजुकेशन एकदम उस क्वालिटी का पहुंच पाता है। ये तो यूट्यूब और ऑनलाइन की फायदा है। आप क्या बात है। ये तो वैसे मेरे सवाल थे, लेकिन वो क्या है, कोई ऐसा मैसेज जो कि आप देना चाहते हैं यहाँ पर आज इस मंच पर लोगों को बताना चाहते हैं, प्लीज बताइए। देखिए, एजुकेशन के सेक्टर में एजुकेशन स्किल, आज के टाइम पे स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम किस बात पे, इंफॉर्मेशन लेते रहो, क्या पढ़ रहे हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से उठा के अंग्रेजों ने लेके गए दिल्ली, वो सबको याद है, 1911 में घोषणा किया, 1912 में लेके चला गया। ये नहीं पढ़ा रहा है कि क्यों ले गया,
एक राजधानी बनाने के लिए क्या जरूरत होती है, क्या क्लाइमेट होना चाहिए, क्या कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो एक सिस्टम में जो चेंजिंग लाने की जरूरत थी अब उसको और जरूरत है। तो ऑनलाइन के माध्यम से ये चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है। दूसरा, हमारे यहाँ एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया गया, जबकि आज का जो 5G का जमाना आ गया है इसमें स्किल्ड की डिमांड है। तो अभी एजुकेशन में 50% इंपॉर्टेंस हमें एजुकेशन और उतना ही इंपॉर्टेंस स्किल पर भी देना चाहिए, ताकि वो अपने पैरों पे जितना जल्दी खड़ा हो सके। हमें एम्प्लॉय जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे एक एम्प्लॉय मिल पाएंगे, बट एक ब्रॉड लेवल पे थिंकिंग वाली डेवलपमेंट करने की अभी भी ज़रूरत है। एजुकेशन में अब जैसे आज़ादी के इतने साल हो गए, लेकिन आज भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्यों नहीं हम डेवलप हो पा रहे हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा मिसिंग चीज़ हम लोग छोड़ते हैं, विमेंस को। गर्ल्स एजुकेशन को हम लोग छोड़ रहे हैं, और मेल जो है उन्हें लगता है कि अपने दम पे अकेले ही देश को लेके चले जाएंगे, और आज़ादी से लेके आज तक वो ट्राई कर रहे हैं। जिस दिन ये हमारे देश की विमेंस और मेंस एक साथ आ गए ना, उस दिन देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब तक हम उन्हें छोड़ेंगे, हम तो आज तक भी मेहनत कर रहे हैं। तो अच्छा, गांव के शहरी क्षेत्र में ये चीज़ है कि लोग महिलाओं को पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन गांव में अभी भी ये चीज़ें हैं, वो नहीं भेजना चाहते। हमारे यहाँ शुरुआत में जब गर्ल्स पढ़ने आती थी तो उनके गार्जियन आते थे और ये रिक्वेस्ट करते थे कि सर मतलब घर से बाहर है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आज लड़कियों की संख्या क्लास में हम लोग देखते हैं इतनी ट्रेमेंडसली ग्रो की है कि गार्जियन लोगों को भी, कई बार हम लोग के पास गार्जियन आते हैं, उन लोग हमसे कहते हैं कि सर यहाँ पे लड़कियां पढ़ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है। हम लोग उनके लिए पूरी प्रॉपर व्यवस्था रखते हैं, और कहते भी हैं लड़कियों से कि जो माँ बाप अगर आपको पढ़ने भेजे हैं तो समाज से लड़के भेजे हैं, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। और अगर आप खाली हाथ गाँव लौटिएगा तो आप उन 100 लड़कियों का रास्ता रोक दीजिएगा जिनके माँ बाप पढ़ने के लिए भेजना चाहते थे। इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी से पढ़िएगा। और लड़कियों के अंदर ये होता है, वो जॉब के बाद भी वो काफ़ी ईमानदारी से अपने वर्क को करती हैं। हम जो एक छोटे से पटना से हम स्टार्ट किए थे, धीरे धीरे जब ग्लोबली हो गया तो हमें अब इंडिया के बाहर भी अपने सेंटर्स डालना है बहुत जल्दी इस चीज़ को, क्योंकि मेरा सपना है विश्व गुरु भारत को एक जगह जहाँ ले जाना था। तो कारपोरेट ऑफिस जब हम लोग ने दिल्ली में डाला तो वहाँ 200-250 एम्प्लॉय जब आए तो वहाँ हमको एक चीज फील करने को रहा था कि जहां 10 लड़के बैठ जा रहे थे वहां कुछ अपनी गपशप भी करने लग रहे थे, कभी डिसिप्लिन की इशू आ रही थी, कभी कोई कैसे आ जा रहा था। तो हम लोग सोचे कि इसको परेशान हो गए थे समझाते समझाते। आप बिलीव नहीं कीजिए, बिना मेहनत वो सॉल्व हो गया एक दिन के अंदर। हम लोग ने 15 के बीच में ना एक गर्ल्स को रख दिया। अब उसके बाद से कोई मेहनत नहीं करना, पूरी डिसिप्लिन है हर 10-15 के बीच में। तो ये तो पावर होता है उनके अंदर, तो उनको अपनी पावर पहचानने की जरूरत होती है। कई बार ना वो इतनी फ्रस्ट्रेट कर दिया जाता है उनको ना कि वो जिस लड़ाई को लड़ना चाहती है वो उससे भटक जाती है, क्योंकि उनको ना उनका अपनी शक्ति, उनके अंदर पावर है। जिस तरह से जामवंत की जरूरत थी हनुमान जी को उनकी शक्ति बताने के लिए, उस तरह से महिलाओं को भी अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत है। और जिस दिन क्लास में, हम तो यही कहते हैं, जिस दिन किसी शिक्षण संस्थान में, एजुकेशन वाले में जितने लड़के हैं उतनी लड़कियां हो जाएंगी, तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाले कुछ समय में देश अपने से बदला हुआ नजर आने लगेगा। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा जगह है, एक ऐसा हथियार है जिससे हम हर तरह की कुरीतियों से लड़ सकते हैं। और अगर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे समाज में देखने को मिलेंगे जिनके पिताजी पढ़े थे लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपको ना मिलेगा कि जिसकी माँ पढ़ी हो अब बेटा अनपढ़ रह गया हो। ये एक जिम्मेदारी होती है माँ की। हमको अभी भी याद है जब हम लोग पढ़ाई करते थे, मेरा कुछ अभी स्टूडेंट लाइफ में थे, तो मेरी मम्मी के पेट में पथरी था, तो वो डॉक्टर कह रहा था कि इसका इलाज करा लीजिए, बहुत रिस्की हो सकता है। लेकिन मेरी मम्मी कही कि नहीं, एक पैसा दे देंगे ना तो मेरा बेटवा पढ़ेगा कैसे। उस पथरी के पत्थर लेके मेरी मम्मी ने मेरा फीस भरा था। और हमको आज भी याद है कि हमको ना जब एग्जाम में हम लिख रहे थे तो मेरा ना वो हाथ कांप रहा था कि हमको किसी भी तरह से सक्सेस होना है, वरना हम अपनी माँ के लिए जिम्मेदार हम ही होंगे। तो मेरी मम्मी पढ़ी नहीं, लेकिन हम इतना तो कहते हैं कि अगर माँ पढ़ी नहीं हमको यहाँ पहुँचा दी, अगर पढ़ी रहती तो कहाँ पहुँचा देती। ये एक पावर होता है विमेंस का। ब्यूटीफुल। तो हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, और प्लीज अपनी बेटियों को रास्ता मत रोकिए, वो इस देश को बदल सकती हैं। 1947 से पुरुष लोग मेहनत कर रहे हैं, अब उनको पता नहीं कब तक करना पड़ जाएगा, इसलिए आप लोग का साथ देना बहुत जरूरी है। और लड़कियों को भी कहते हैं कि अगर माँ बाप आपको पढ़ने के लिए बाहर भेज रहा है
तो बड़ा समाज से लड़ के भेज रहा है। तो उस समाज का भी ख्याल रखना है कि जब बारिश होती है तो हम छाता लगाते हैं, बारिश तो अपने वक्त पे रुक ही जाएगी। तो समाज भले लड़कियों को पढ़ने न दे, लेकिन छाता लगाना है, समाज से लड़ना है और माँ बाप को यह साबित करना है कि समाज यही ना कहता है कि घर से बाहर जाएगी तो शायद संस्कार भूल जाए। माँ बाप को यह विश्वास दिला के रखना है। लड़कियों से भी कहेंगे कि बाहर निकलने के बाद, सफल होने के बाद माँ बाप को यह सिखाना है कि देखिए हमें संस्कार में 4 गुना बढ़ोतरी हो गई, आपको जिसका डर था हम वो कभी नहीं होने देंगे, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो एजुकेशन, हमें बहुत लड़कियां पढ़ने आती। एक बार हमारे संस्था की बात थी कि रात का एक बैच था 8 से 9 का, और अचानक बारिश आ गई और इतनी जोर से बारिश आई थी कि छुट्टी देना पॉसिबल नहीं था। लड़के तो भाग गए कैसे भी भीग भाग के, कुछ लड़कियां बच गई, बेचारी कैसे जाएंगे। तो हम उस समय कुछ बस वगैरह जहां तहां से इंतजाम करा के उनके हॉस्टल भेजे कि जिनका इधर है, और लगभग 11 बज गए। उसके कुछ दिन, 1-2 दिन बाद उनके गार्जियन आए और थैंक्स कहे कि सर आप इतना किए एजुकेशन के लिए। तो हमने उनसे कहा कि नहीं, ये आपकी गलतफहमी है कि हम इन लड़कियों के लिए या आपकी बेटियों के लिए किए। हम उनके लिए कहें कि जिनके अंदर देश बदलने की क्षमता है। हम जो भी किए ये उन लड़कियों के लिए किए जिनके सही में, जिनके अंदर देश बदलने की क्षमता रहेगी। तो एजुकेशन के लिए हम जरूर कहेंगे कि इस जगह में थोड़ी सी कमी होती है, तो लड़कियों को आगे जरूर बढ़ाया जाए। मैं मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स, शब्द नहीं है मेरे पास यहाँ पर अब कुछ कहने के लिए। आपको कितने एम्प्लॉयज हैं अब आपके पास, मैं बता रहे थे? अलग अलग सेंटर पे अलग अलग हैं, बट जिस सेंटर का हम एग्जांपल दिए हैं लगभग उसमें 250 से 300 है। इंडिया में देखें तो मतलब कुल मिला के आपके पास कितने हैं? खान सर द ब्रांड के पास में कितने एम्प्लॉयज हैं? अभी तो हम लोग 250 से मतलब 400 के आसपास है, बट इसको बहुत जल्दी हम लोग और ब्रॉड लेके जाएंगे। 400 के आसपास नहीं होता है, 400 लोग हैं जो कि आपके साथ में इसमें जुड़ गए हैं। इट्स अमेजिंग। दिस इज अनदर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपने अपने कंधों पर ली है, जिम्मेदारी ली है कि आप इतने लोगों को अपने साथ में जोड़ रहे हैं, उन्हें भी आप काम दे रहे हैं अलॉन्ग विद पढ़ाई। इट्स ब्यूटिफुल। आपने मुझे जो आज इंस्पायर किया है मैं बता नहीं सकती हूँ। दिस इज गोइंग टू गो अ वेरी वेरी लॉन्ग वे। थैंक यू। और जो 2 आंसू मुझे यहाँ से बैठ करके खड़े होकर के आपकी आंखों में दिख रहे थे, वो भी मुझे हमेशा याद रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Alright, so ladies and gentlemen, यहाँ पर जो इतनी एनर्जी और एंथुजियाज्म बढ़ गया है, इसे यहाँ पर मैं कम नहीं होने देना चाहती हूँ। इसीलिए एक ऐसी इंसान जिसे मैं लंबे समय से जानती हूँ, सालों से जानती हूँ, जो कि she is an inspiration to me now. I mean, the places that this girl has reached, it is tremendous, the success that she has achieved. We know her by the name Mostly Sane, but actually she drives all of us insane through everything that she does, not just, you know, in the world of entertainment, but for the society. So the OG influencer of our country, ladies and gentlemen, please put your hands together for the vivacious Prajakta Kohli. Actually, there is so much that I want to speak to you about. Also because, you know, we've worked together. और उसके बाद से जो उड़ान एकदम भरी है, तो वो हॉल्ट पे कभी आई ही नहीं कि हम रुक कर के बात कर पाए। तो सोशल मीडिया टर्म्स में मैं कहना चाहूँगी, रुको जरा, ठहरो। My God, yeah, like all heart. Thank you. Love to you. Thank you, Ruchi. Also, good evening to everybody. खान सर के बाद बात करना थोड़ा टफ है. So please don't have expectations too high. Oh my from God! me right now. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Prajakta Kohli has made such remarks, and you know, इस तरह के achievements not just हमारे देश में nationally but globally जो आपने achieve किया है. You've reached places, you've represented the country, you have spoken so much and worked so much, you know, for the empowerment of women once again. तो ये सब तो किया है, ये सब तो लोग जानते हैं also because you are on social media and it's social, it's public. लेकिन tell me something, you know, in this age of social media जहाँ पर trends चल रहे हैं, how do you maintain your identity? Because we've always seen Prajakta being Prajakta. कैसे हो जाता है ये? I think so I started making content 2015 में, I think in the Feb of 2015. I just finished 8 years. और तो शुरुआत में जब मैंने start करा था content करना, मुझे लगता है उसी वक्त, and I always give this credit 100% to my team, because उस time पे
सुदीप, सौरभ who's here with me, गुरप्रीत from Monday Entertainment, उस वक्त उन्होंने मुझे बताया था कि ये बहुत लंबी रेस है और pretend करना बड़ा tiring हो जाएगा थोड़ी देर के बाद. So you choose right now what you want to do. Do you want to have a face that you keep on every time you go in public, or do you want to be yourself because the life will just get easier? तो that's how I started. Also मेरी audience ने मुझे हमेशा बड़े honestly feedback दिया है. उन्होंने हमेशा मुझे बोला है कि ये सही लगा यार, ये तू ऐसे मत किया कर, बड़ा fake लगता है. And I appreciate that. तो वो feedback लेके I think बहुत जल्दी मैं comfortable हो गई थी. So I think that's what moved. You know, आज की शाम is all about social responsibility. CSR Awards उसी के बारे में होता है. With the kind of followers that you have, and I'm sure 1-2 million और add हो गए होंगे इसमें from the last time I checked. But with some 7.4 million followers on Instagram, 7 million subscribers on YouTube, एक तरफ जहाँ पर I'm sure it must be, you know, excitement होता होगा and you feel so happy about it, but also बोझ भी तो लगता होगा ना, because there are so many people who are looking up to you, following you. So that is a responsibility when it comes to the social responsibility that we are talking about. How do you deal with that? रोज की रोज ऐसा लगता होगा ना कि मैं ये कर रही हूँ, लोग इसको कैसे perceive करेंगे? There will be people who will start following me. Am I doing the right thing? How do you deal with that pressure? I mean, again, and I say this only for me because I believe that it's very different. The journey with responsibility online is very different for every creator. Everybody makes their own choices. As for me, I remember when I had hit my first 1,000 subscribers out, and I think I kind of realized the depth of responsibility with the time that people spend. Because as a YouTube consumer, मैं बड़ी picky हूँ. कि ये तो नहीं, ये बकवास है, चलो 6 सेकंड 4 सेकंड में बंद कर दिया वीडियो, नहीं देखा जा रहा, ये चैनल नहीं देखना, वो चैनल नहीं देखना. I was always very picky with content. So I think वहाँ पे I realized the impact that it was having, because I was like, if people are choosing to spend time that they could spend doing anything else, like napping, or like eating, or like hanging out with friends. Everything that you like. Everything that I like. So if they are choosing to watch my content, there's got to be some sort of responsibility that I felt for their time. So before all the social responsibility and everything that was close to my heart or passionate about, वो तो बहुत बाद में मेरे दिमाग में आया. I think शुरुआत में the responsibility started with कि oh नहीं, अगर कोई 6 मिनट का वीडियो देख रहा है, it should be worth their time. And then organically, I think जिस तरह से मेरी audience से मेरी बातें होती थी, they were very honest with me. We started speaking about mental health, we started speaking about body positivity, girls' education. Very recently, I started speaking about climate change, and I think that has become a very organic conversation. और वो थोड़ी सी आदत सी बन गई थी. Also, the way sometimes people make the internet sound, it's really not that tough to be responsible. Okay. Yeah, like it's overwhelming, but it's not that tough. If you're just aware and you are ready to take responsibility for everything you say or do, I think it's okay. No, but you know, मैं actually, I would not agree with you that it is that easy, because I will tell you guys about this one thing that happened. Mismatch जब आपका आया, उसमें we just met, and उस समय पर there was a bottle of water that was kept, it was plastic. And she immediately told me that, no, I'm not going to have water from that plastic bottle. I just need like a glass. So these are conscious choices that you have to make as a public figure, and love you so much for it. Thank you. And thank you so much for actually telling us also कि ये सब कुछ हम सोच सकते हैं किया जाना चाहिए when you are in the eye of the public. Thank you, Ruchi. You know, while I'm on stage, I'm going to take like a couple more minutes and tell you about Ruchi. Before I started making content, मैं Ruchi के show की बहुत कम time के लिए producer थी. And I learned a lot from you when it comes to being like on the mic or on stage, or the way you used to write, or the way you used to carry yourself in the studio. And I want to tell you that I'm grateful that I got to work with you. Just to all to just maintain your patience for a few more minutes, and we are going to have the chief guest of the evening, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde ji, here with us.
While we are waiting for our chief guest of the evening, Shri Eknath Shinde ji, to join us here this evening, once again, a warm welcome to everybody who is present here. It matters the world to us. It means the world to us that you took out time this Saturday and you're here celebrating the CSR Journal Excellence Awards. We are also pleased to share that this 5th edition of the CSR Journal Excellence Awards is being streamed live in 8 countries. Yes, that is right, live in 8 countries. And that is all thanks to our international radio partner, Fun Asia 104.9 FM. So that is what is happening. CSR Journal has gone global thanks to the international radio partner, Fun Asia. And also, as we spoke about Andromeda, which is an OTT platform, CSR Journal is also live on Andromeda now. I have the pleasure of having with me here the CEO of Fun Asia Radio, Vaishali Thakkar. Vaishali, how are you doing this morning? I'm very well, thank you. Vaishali, why don't you talk to us about what this partnership with CSR Journal means to the community? We are off to a great start. I think there is a great energy here and aligned with our mission. Fun Asia is all about bringing the community together and joining hands with CSR Journal. We will be able to reach globally, and it is going to be amazing. Well, absolutely. I think I completely agree with you that using this Fun Asia platform, we'll be able to probably 10x the reach of the CSR Journal. Talk to us a little bit about the reach of the Fun Asia platform, Vaishali, just so that our audience knows about the reach of the platform. Definitely. Fun Asia is the true FM station in entire US, the true South Asian FM station. And we have many more FM stations. We are trying to reach 1 million plus listenership, people who are going to not just listen to us, but view us. There is a huge viewership. We are not just an audio, but we are visual too. And also, digitally, globally, we have 14 million listenership. So it is going to be a great start for CSR Journal to join hands with Fun Asia. Absolutely wonderful. And like you said, this is Jai Hind, Jai Maharashtra, Vande Mataram. Kya baat hai, what a beautiful AV. All right, with this, I would also like to tell you guys, while we are also waiting for our chief guests to arrive, it's only going to take 2 more minutes, but before that, I would like to tell you guys that Z News, Z Business, and Z 24 Stars are our television partners, and we could not have thanked them enough for giving us the kind of coverage and giving us the kind of support that they have. So, to show our gratitude towards our team. And the social media link. I would like to thank all the viewers who followed live the person me and the best actors. Thank you to all the viewers of Shri and those who followed live for awarding me with Best Actor. This work, the show that wraps the world's biggest global stories and brings you up close to the biggest news victims. And the 30-minute show that aims to bring the India story to the world. We help to understand global developments from an Indian perspective. I'm Vikram Chandra, and this is Beyond, World is One, taking India's voice to the world. Perfect. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we'll take a short 2-minute break while we anticipate the chief guest's arrival. Thank you so much.
Request you all to please be seated, because the chief guest is going to be here any second. So I request you all to please maintain some patience and be seated. Thank you.
चेक वन। एक बार मैं चाहूँगा एक जोरदार तालियां हमारे आदरणीय सीएम साहब के लिए। और आप अपने कीमती समय से कुछ पल आप यहाँ लेकर आए हैं। मैं बस यही दुआ करूँगा माता रानी से कि माता रानी आप पर और आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। सो छोटा सा मैं एक यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन लेकर आया हूँ सॉन्ग्स का। जरा मैं चाहूँगा एक बार ताली बजाकर मुझे आप आशीर्वाद दे दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चला दो भाजी। तब जाके कहीं हमने ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं मेरी नस नस तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सही, महफूज रहे तेरा न सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुलड़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में रह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ मेरे साथ साथ गाइए। ओ वो किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे वेखदा रवा। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे वेखदा रवा। दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल करे वेखदा रवा। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। सारे गरे सरे सारे गरे धसा, सारे गरे सरे रे रे रे, सारे गरे धसा। पादसा दसा दसा गरे पादसा दसा दसा रे रे सा, पादसा दसा दसा गरे रे पादसा दसा दसा रे रे सा। Everybody ding 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 ding। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी
धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी खुशबू बोराई सी मस्त की, थोड़ी सी धूल मिला दी धक 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 सांसें जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये रंग तू मिला मिला ले फिर सब तू खिला खिला ले, ये रंग तू मिला मिला ले फिर सब तू खिला खिला ले। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती यारो, मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे 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 मोहे तू रंग बसंती, मोहे मोहे तू रंग दे 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 बसंती, रंग दे बसंती, रंग दे बस, रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार से मेरे साथ कहिएगा भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मुझे एक शिकायत है कि थोड़ी तालियां कम बज रही है यहाँ पर। इतना तड़कता भड़कता परफॉर्मेंस, जोश भरा परफॉर्मेंस अमित लेकर के आए थे, ये हुई ना बात। It's truly a mesmerizing performance. A memorable time frame when a true leader, a beginner, addresses action equals this man's love for our country and its societal progress. I'm excited क्योंकि अभी आप सुनने वाले हैं the CSR Journal के CEO and Editor-in-Chief Mr. Amit Upadhyay को। Sir, the gathering awaits your inspiring address. Good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome and many thanks to each one of you for being with us today. मैं खास धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का, जिन्होंने आज की इस शाम को एक बेहद खास शाम बना दिया हमारे बीच यहां प्रेजेंट रहकर। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हर साल जब ये CSR अवार्ड्स होते हैं यहाँ आता हूँ तो मेरी टीम मुझसे एक्सपेक्ट करती है कि मैं यहाँ आऊँ। वो 2-4 बार मेरे पास आते हैं, मुझे बोलते हैं अपने ब्रांड के बारे में आपको कुछ अच्छा बोलना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, जब तक मुझे यहाँ आकर बोलने का वक्त आता है मैं सब भूल जाता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मैं 1-2 बातें भी जो पिछले साल में जो 1 साल गुजरता है अवार्ड्स के पहले, उसमें जो भी मैंने सीखा है, जाना है, महसूस किया है, अगर वो मैं आपके साथ हूं तो शायद से ज्यादा खुशी किसी चीज में मिल ही नहीं सकती। सो आई सेम थिंग अगेन टुडे। आई होप माय टीम फॉरगिव्स मी, लेकिन मैं फिर से सिर्फ 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला चीज ये कि ये जो CSR जर्नल है, ये अ ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हम लोगों ने यूं ही शुरू कर दिया था। उस समय तो यही था कि लिखने का शौक था, तो सारे दोस्त थे, बोले चलो CSR जर्नल है, CSR का कानून आ रहा है, CSR के बारे में लिखते हैं, शायद इट विल प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर अस। बट मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूं कि जैसे 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 समय बीतता गया ये सोच ही बदलती गई, और 2-3 साल के बाद एक ऐसा समय आ गया जब पूरे विश्वास के साथ मुझे ये लगने लगा कि मैं CSR जर्नल किसी भी कमर्शियल बेनिफिट के लिए नहीं चला रहा हूं। दूसरा चीज जिसका एहसास मुझे हुआ वो ये था कि मैं सच में एक ऐसी चीज डेवलप हुई है विद द CSR जर्नल कि दूसरों की खुशी से खुश होना और दूसरों के दुख से दुखी होना, ये एक अपनी पर्सनैलिटी में एक ऐसा ग्रोथ मैंने महसूस किया जो शायद मैं हमेशा चाहता था कि मैं इस तरह का इंसान बनूं। सो आई थिंक टुडे आई वांट टू थैंक द CSR जर्नल फॉर मेकिंग मी द काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग आई वुड हैव वांटेड टू बिकम। दूसरी चीज ये है कि ये सफर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि CSR में जैसा मैंने आपसे बोला, आप दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के दुख के लिए, अच्छी चीजें करने के लिए, अपने देश के हित के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। तो कमर्शियली इट्स नॉट वेरी वाइबल, इट्स अ कमर्शियल वेंचर बट इट्स नॉट वेरी वाइबल।
और हमेशा दूसरों की खुशी और दूसरों का दुख सुन के आगे बढ़ते रहना और दूसरों के बारे में सोच के आगे बढ़ते रहना थोड़ा टफ हो जाता है। बट मैं एक चीज आज आपसे बताना चाहता हूं कि CSR जर्नल आज कम से कम 500 लोग CSR जर्नल में काम करते हैं पूरे इंडिया में, लेकिन सिर्फ 25 लोग ऐसे हैं जो CSR जर्नल के पेरोल पे हैं और जो पैसों के लिए काम करते हैं। अब ये शायद मुझे और वक्त लगेगा इस चीज को एक्सप्लेन करने में, बट बिलीव मी, वी हैव सच अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क अक्रॉस इंडिया। और यू नो, आई कांट बिलीव दैट वी हैव पीपल who have so much for their country, so much for their communities, and they really want to contribute। सिर्फ उनको उनका विजन और आपका एक जेन्युइन विजन, मुझे लगता है कि एक जेन्युइनिटी इतनी बड़ी चीज है कि उनको ये सच में लगना चाहिए कि आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। दूसरी चीज, अपने एक्सपीरियंस से मैं एक दो चीजें CSR की शेयर करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप यहां से लौट के जाइए तो एक बार जरूर इसके बारे में सोचिएगा जो मैंने आज कहा। हम सब लोग हमेशा विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। आजकल सबसे कॉमन और इंटरेस्टिंग और सबसे हैपनिंग टॉपिक है लोगों को बात करने के लिए व्हेन वी टॉक अबाउट विमेन। और मैं हमेशा ये सोचता हूं कि हमारी औकात है विमेन एम्पावरमेंट, विमेन फॉर माई स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बट यू नो दिस इज व्हाट आई रियली फील। और मुझे लगता है कि मैं अगर अपने दिल की बात स्ट्रांगली नहीं कहूंगा तो शायद आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। आप सोच के देखिए कि एक नारी जो हम सब की जननी है, उसको हम एम्पावर करने की बात करते हैं। आज हम मर्द लोग, हमारी एक हड्डी टूट जाती है तो शायद हम 10 दिन तक घर पे बैठ जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी बीवी, हमारी बहन, हमारी माँ हमारी सेवा करेगी और हमें उस चीज से जो भी हमारी तकलीफ है उस चीज में हमारे साथ हाथ बटा के चलेगी। और वही औरत, वही नारी, वही स्त्री, हजारों फ्रैक्चर हो जाएं, जो दर्द सहना पड़ता है, वो दर्द सह के वो हमको जन्म देती है इस दुनिया में लाने के लिए, जब हम ये बात कर सकें कि हम विमेन एम्पावरमेंट करेंगे और हम नारी शक्ति की बात करते हैं। और मैं ये सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सच में चाहता हूं कि आप एक बार व्हेन यू गो बैक होम एक बार जरूर सोचिएगा कि हमारी औकात है विमेन को एम्पावर करने की। सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैं पूरे देश में घूमता रहता हूं और लोगों से बात करता रहता हूं। सिर्फ उनको इज्जत देने की जरूरत है। इज्जत भी वो इज्जत की भूखी नहीं है, इज्जत इसलिए देना है क्योंकि एक नारी समझती है कि आज सो कॉल्ड हम मर्द, यू नो, वी ऑल मैन, जो हम अपनी सुपीरियरिटी दिखाना चाहते हैं तो वो खुश होती है हमारी सुपीरियरिटी देख के, और इसलिए वो हमें हमेशा मजबूती दिखाने की कोशिश करती है कि हम ज्यादा मजबूत हैं। और हम खुश होते हैं कि मेंटली एंड फिजिकली वी आर स्ट्रॉन्गर देन विमेन। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, उनको सिर्फ रिस्पेक्ट दीजिए। वो रिस्पेक्ट की भूखी नहीं है, जस्ट गिव देम रिस्पेक्ट। उनको किसी एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, विमेन डोंट नीड एनी एम्पावरमेंट। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, CSR की बात, हम सालों से CSR की बात कर रहे हैं। मुझे हंसी आती है, आज हमारे ऑफिस में आप आएंगे तो हमारे ऑफिस का प्यून भी बोलता है, सर CSR में क्या चल रहा है, CSR में आप क्या कर रहे हैं। साउंड्स वेरी फैंसी। उनको लगता है यार CSR मतलब कुछ बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं, और मुझे वो लोग समझते हैं ये तो खुदा है, भगवान के बंदे हैं। दिन भर आके बोलते हैं सर आप तो CSR करते हो, आप तो अच्छे काम करते हो। लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़िया है, हमारे एफर्ट्स जबरदस्त हैं, और जो हमारे कॉर्पोरेट्स काम कर रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल। बट मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर सच में बदलाव लाना चाहते हैं, प्लीज छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। अगर आप कॉर्पोरेट में भी काम कर रहे हैं, एज द CEO ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने इसकी शुरुआत किया था तो मुझे लगता था कि किसी को जरूरत है अपनी नेटवर्किंग के लिए, किसी को थोड़े पैसे दे देने के लिए, जस्ट टू हेल्प माई नेटवर्क ग्रो। ये बंद कर दीजिए, मत करिए ऐसा। इससे कोई ग्रोथ अपने देश की नहीं होने वाली है। और हम अपने प्रॉफिट में से, फॉर गॉड सेक, हम अपने प्रॉफिट में से निकाल के कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सोचिए कि हम कैसे अपने समाज, अपने देश का भला कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। द CSR जर्नल में हमने अपनी HR पॉलिसी में एक चीज इंक्लूड की है। आपको शायद सुन के उतना स्ट्रांग नहीं लगे, छोटी सी चीज लगे, बट बिलीव मी ये बहुत ही स्ट्रांग चीज है। हमने अपनी HR पॉलिसी में एक चीज इंक्लूड किया कि हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं,
मुझे नहीं पता वो क्या करना चाहते हैं। हो सकता है किसी को एजुकेशन में सपोर्ट करना चाहते हो, टी प्लांटेशन करना चाहते हो, किसी भी तरह का योगदान देना चाहते हो अपने सोसाइटी की, अपने समाज की, अपने देश की ग्रोथ के लिए। लेकिन जो भी आप करते हैं, डे 1 को द HR मीट्स एवरी सिंगल एम्प्लॉई एंड आस्क्स देम, आप पूरे साल में कौन सा ऐसा काम करना चाहते हो विच विल प्रूव दैट यू आर अ सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और सिर्फ इतना ही नहीं है, डे 1 को वो जो शुरू करते हैं और 31 मार्च के पहले जब उनका इंक्रीमेंट होता है, उसका बहुत बड़ा 40% जो क्राइटेरिया है वो ये दिया गया है कि आपने डे 1 से शुरुआत करके आखिरी दिन तक जो पौधा आपने लगाया था, वो पौधा किसी भी तरह से आपने लगाया हो, किसी की एजुकेशन में, किसी की लाइफ बचाने के लिए, कुछ भी आपने सामाजिक काम किया है, उसकी ग्रोथ क्या हुई है, कहां तक आप पहुंचे हैं और उसका समाज में उसका क्या इंपैक्ट हुआ है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज एज अ सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर आपने अपनी, वी विल नॉट नीड एनीथिंग मोर, एब्सोल्युटली नथिंग मोर। सो प्लीज एवरी सिटीजन, ऑल ऑफ अस हियर, लेट्स डिसाइड टुडे। अगर मेरी मेहनत का, CSR जर्नल की टीम की मेहनत का अगर आप हमें कोई भी सिला देना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि रोज एक ना एक अच्छा काम जरूर करिए, वो कितना भी छोटा या बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एज अ इंडिविजुअल, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, प्लीज कोई एक अच्छा काम करने की कोशिश जरूर करिए। इससे पहले कि मैं अपनी स्पीच को विराम दूं, मैं एक शेर आपसे पढ़ना चाहता हूं जो मैंने बोला उसको कंक्लूड करने के लिए। इत्र से कपड़ों का महकना तो कोई बड़ी बात नहीं। इत्र से, आई एम श्योर पीपल नो व्हाट इज इत्र, इट्स परफ्यूम। तो इत्र कपड़ों का महकना बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब किरदार से खुशबू आए। तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि जहां से गुजरिए सब लोग बोल दें कि यार क्या इंसान जा रहा है, हमारे देश को किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। वी विल बी, यू नो, एज वी से 10 साल के लिए हमने बोला इंडिया फर्स्ट, और 10 साल बाद हम अपनी रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करेंगे कि हमने 10 सालों में थ्रू CSR जर्नल एंड थ्रू CSR जर्नल एक्सीलेंस अवार्ड्स एंड ऑल आवर एफर्ट्स हमने अपने देश को कहां तक पहुंचाया। तो बस आपसे यही विनती करते हुए मैं विदा लेना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अमित जी, मैं चाहूंगी आप 1 मिनट के लिए स्टेज पर ही रहें यहाँ पर, क्योंकि मैं सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द मूविंग वर्ड्स, और लास्ट वाली वो शायरी तो मतलब इट वाज एक्चुअली आइसिंग ऑन द केक। लेकिन यहाँ पर मैं इस समय आशीष चौहान जी को भी बुलाना चाहूँगी, MD CEO ऑफ NSE, टू गिव अ स्पेशल मोमेंटो ऑन बिहाफ ऑफ NSE टू अमित उपाध्याय जी। प्लीज। Amit ji, we are so hopeful during present here, and those watching and around will resonate with the passion and values to make CSR every citizen's social responsibility. Thank you so much. Ladies and gentlemen, with this, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, आज की शाम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. Now, like to invite Mr. Amit Upadhyay to receive and welcome on stage our chief guest for the evening. हमारे आपके आदरणीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब महाराष्ट्र के श्री एकनाथ शिंदे जी, मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ हमारे चीफ गेस्ट को आज शाम के वेलकम करें. And on this occasion, on behalf of the CSR Journal, I request Mr. Upadhyay to welcome our chief guest. All right, now that you see, कुछ बहुत ही खास हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगी इसके बारे में. We have a very special token of our appreciation to present to our chief guest. I would like to invite Deepali from Karma Art Gallery, who has made this possible. The special gift from us has been possible because of Karma Art Gallery.
अमित जी, मैं चाहूंगी कि ये जो फूलों का गुलदस्ता है ये आप प्लीज गिफ्ट करें हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री एकनाथ शिंदे जी को। Along with this, I kindly request our chief guest and Mr. Upadhyay to take the dais, and I also request Dr. Shri Shinde, Member of Parliament, Mr. Ashish Chauhan, to join us on the dais. आशीष जी, NSC की तरफ से एक खास मेमेंटो हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री एकनाथ शिंदे जी को प्रेजेंट करते हुए, समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक खास तोहफा NSC की तरफ से। Thank you so much, and I would respectfully ask all of you to please take your place on the dais. Can we have one more chair on the stage? All right, so while we are all settling down, let's move ahead with the awards. Since 2016, the CSR Journal has remained committed to reorganizing and recognizing, realizing the value and power of individual efforts in bringing social change. The Social Welfare and Growth Awards in 2016 featured remarkable and inspiring contributions from civil society and individuals operating in various social sectors, which needed to be brought to the forefront. In carrying forward this legacy, I'm happy to call upon stage the winner for this year's Social Welfare and Growth Award. Ladies and gentlemen, put your hands together for the winner of the Social Welfare and Growth Award 2022 for holistic approach to delivery of social safety, which is Hon'ble Foundation. Hon'ble Foundation, congratulations to Hon'ble Foundation.
Moving on, I also take this opportunity to invite on stage the CSR Journal's Youth Icon Awardee of 2022, Khan Sir. Hailing from a small town, Deoria in Uttar Pradesh, Khan Sir has become the nation's favorite educator due to his unique style of teaching. When his dreams of joining the Indian Army shattered, he found another way of serving his country by fighting illiteracy. He says, which is very famous, "हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, दम है तो भूल के दिखाओ." We are so happy and glad कि आज की शाम आप यहाँ पर आ पाए हैं और हमारे साथ इस अवार्ड फंक्शन का हिस्सा बन पाए हैं. He spreads knowledge to his 25 million subscribers for free, and that is not a joke, ladies and gentlemen. अब अगला सम्मान उनके लिए जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया. डॉक्टर अभय बांग और डॉक्टर रानी बांग ने कम्युनिटी हेल्थ में जो योगदान दिया है वो अतुलनीय है. We now move forward to announce the winner of our Lifetime Achievement Award in the space of health and social development. Dr. Abhay Bang and Dr. Rani Bang, the founders of Society for Education, Action and Research in Community Health. With great pride, I invite on stage Dr. Abhay Bang on behalf of both our awardees, Lifetime Achievement Award 2022. डॉक्टर बांग, आपसे एक हम सवाल करना चाहेंगे. डॉक्टर बांग, ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इतनी आपकी जर्नी में सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है, एंड हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड एज अ कम्युनिटी, एज अ कंट्री टू प्रोटेक्ट द नीड्स ऑफ आवर एज. एक सवाल में मैंने 2 सवाल पूछ लिया आपसे. हाँ जी, हाँ जी. जो बिगेस्ट लर्निंग है, मैं वैसे छोटा आदमी हूँ, फिर भी अगर कुछ हम लोगों के हाथों से काम हो सका जिसके लिए आप आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं, तो एक वाक्य में वो लर्निंग कहना हो तो ये है, गो वेयर द प्रॉब्लम्स आर एंड नॉट वेयर द फैसिलिटीज आर. Places with facilities don't need you. There you become a problem. Yeah. Instead, go where the problems are waiting for you and there is no competition. There is no competition. That's the only learning I have. And your second question was about? How, as a country, what should we do to protect the needs of aging population? Well, the country is going through, already gone through a revolution which we call in technical jargon epidemiologic transition. From malaria, TB, diarrhea, cholera, we are now moving to cancer, suicides, mental health, diabetes, heart disease. This is the transition. And it's happening along with the aging of the population. So control of non-communicable disease is a new national priority in health. And it cannot be merely done by curative hospital-based approach because it is extremely costly, astronomically costly. It's much more important that we work on the social determinants. And so spreading knowledge about why these diseases occur. And the 2 most important causes of non-communicable disease, as WHO and the global burden of disease, are tobacco and alcohol. So tobacco and alcohol are the modern cholera and plagues. We need to control them. So the aging population needs special focus, economic support, social support, but as well as health support for non-communicable disease. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, Dr. Bang. Your presence is an inspiration, and these words are really encouraging. Thank you once again. With this, we now move forward with the winners of the Special Commendation Award in CSR. It is my pleasure to announce
Mahindra and Mahindra Financial Services Limited to please come join us on stage to receive the Special Commendation Award in CSR for their project Swabhiman, a holistic driver development. The Swabhiman program is implemented pan-India in multiple districts across 13 states, duties with diverse socio-cultural and linguistic backdrop. The program is envisioned to holistically address the various challenges faced by the driver community. This program addresses the most material issues of the drivers to bring about meaningful change in their lives and include the Many congratulations to you.
join us on stage to receive the special and mechanics. Thank you so much. I'm sure this is a moment you are going to remember for years to come. We will now proceed with the final category of the CSR Journal Excellence Awards 2022, Women Empowerment and Child Welfare. क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे there's a great difference between empowering women and giving power to women? The difference exists across welfare, delivery, equal opportunity in the market and at the household level. अब चाहे वो फिल्में हो, कहानियाँ या कुछ भी क्यों ना हो, ये कोई भी मानने से मुकरेगा नहीं कि घर एक औरत से ही चलता है। जब भारत को माँ कहकर दिया, घर पर पत्थरों को सजाकर देवी से आशीर्वाद लिया, तो जिन्हें आगे बढ़ने का शौक है, उन्हें मौका मदद क्यों नहीं? बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। Many congratulations to our top three in empowerment and child welfare. National Mineral Development Corporation Limited, NMDC Balika Shiksha Yojana, Excel International Private Limited, Vedanta Limited, Nandghar. With that thought, I would also like to call stage our jurors, Shri J.S. Saharia ji, Shri Ajit Kumar Jain, Shri Vishwanath Giriraj. Can we have you on stage, please, to present the awards and to announce the winners? Thank you so much for joining me on stage, sir. मैं चाहूँगी कि please second runner-up award किसे मिल रहा है इस category में, उनका नाम आप announce करें यहाँ. Second runner-up, जी mic भेजिए please. Second runner-up, Para Excel International India Private Limited. All right, can we have on stage Excel International Private Limited? Congratulations, congratulations to all of you. Thank you so much and congratulations. Can we have the name for the first runner-up, please? First runner-up is Vedanta Limited. Right, congratulations to Vedanta Limited for securing the second place in the CSR Journal Excellence Award 2022 in Women Empowerment and Child Welfare. Thank you and congratulations once again. Yes, we already know who the winner is, but I would like you to announce. So please, sir, bataiye. And the winner in this category is National Mineral Development Corporation. All right. It is a pleasure to invite on stage the winner for this year's CSR Journal Excellence Award in Women Empowerment and Child Welfare category, National Mineral Development Corporation Limited. सर आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी मैं कि
स्केलेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये प्रोजेक्ट की स्केलेबिलिटी सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कैसी है बताएंगे ज़रा? आप सभी को नमस्कार। खासतौर से महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जननायक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने समय दिया इस कार्यक्रम के लिए। CSR जर्नल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम जैसे लोग जो बहुत रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं, ट्राइबल एरिया में काम कर रहे हैं, नक्सल अफेक्टेड एरिया में काम कर रहे हैं, उससे इस सब से उनको उत्साह मिलता है, हमारी टीम को प्रोत्साहन मिलता है। जहाँ तक स्केलेबिलिटी का सवाल है कि जो प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे हैं उसमें हम लोग बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। और NMDC के बारे में बताना चाहूँगा, भास्कर साहब यहाँ पर बैठे हैं, उनसे ज़्यादा शायद NMDC के बारे में कोई नहीं जानता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि NMDC पूरी का पूरा एक एजुकेशन सिटी रन कर रहा है, जो कि वर्ल्ड के 100 प्रोजेक्ट्स में से एक है सर, और वो भी दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ में है सर। तो ये तो प्रोग्राम बहुत छोटा प्रोग्राम है हम इसमें, लेकिन हम एक पूरा सोशल फैब्रिक चेंज कर पाए सर इसमें, क्योंकि हमारे नक्सल एरिया में जैसा किसी ने कहा था कि डॉक्टर्स जो है गाँव में नहीं जाना चाहते हैं, उसी प्रकार से सर जो लोग हैं, खासतौर से नर्सेज जो हैं, पैरामेडिकल जो हैं, वो भी गांव में जाना नहीं चाहते हैं, नक्सल एरिया में बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। तो हमने खुद की वहाँ की ट्राइबल BPL गर्ल्स का पूरा कैडर खड़ा कर दिया है सर, और आज 600 लड़कियाँ जो है अपनी ही कम्युनिटी को हेल्थ सर्विसेज दंतेवाड़ा और बीजापुर और सुकमा जैसे जिले में दे रहे हैं। तो इसको स्केलेबल है, ये कर सकते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you and congratulations to you once again, sir. I would like to thank all the jurors. Thank you so much for joining me on stage. I'm pleased to announce the winner of the CSR Journal's Leadership for Social Change awardee, Dr. Shri Shinde. In his honor, the team has actually readied a short video. Sir, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम ये AV play कर सकते हैं प्लीज़? श्रीकांत शिंदे कुशल मेडिकल डॉक्टर है, श्रीकांत सांसद है, तो श्रीकांत शिंदे सामाजिक कार्यकर्ता भी है। समाज में भी आप जो है वो राजनीति कतार में खड़े आखिरी शख्स तक मदद के हाथ बढ़े, इसके लिए श्रीकांत शिंदे ने एक फाउंडेशन बनाया। नन्ही आराध्या की इनमें से एक है। आराध्या जब 6 महीने की थी तब नीता और साइना को ये पता चला कि उनकी मेडिकल लिवर खराब हो गया है, जिसके इलाज के लिए 23 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। हम करेंगे, लेकिन ये करके दिखाएंगे। आपके माध्यम से किसी का ऑपरेशन होता है और जब वो इंसान ठीक हो जाता है तो एक अलग आनंद जो है आपको उसमें से मिलता है। ये है दीपाली लाड और अर्चना बच्चे, इन दोनों की हंसी साफ बताती है कि आज ये बहुत खुश है। यही हाल अर्चना का भी था। उल्लास भी सरकारी लाभ की कार्यवाही के अधिकार हुए। हमारा रोड राइडिंग में घर गया था, घर के बदले घर नुकसान सब गए, जीते उनके प्रयत्न से हम 6 महीने के अंदर उसका रिजल्ट मिल गया। छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे छोटे काम आपके लिए होते हैं, लेकिन लोगों के जिंदगी में वो बड़े मायने बड़े बदलाव करते हैं। चाहे मेट्रो हो या फिर फ्लाईओवर, रोड या रेलवे, श्रीकांत की छवि इंफ्रास्ट्रक्चर मैन की हो रही है। मुझे पता नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर मैन कौन कहता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े काम जो है मेरे चुनाव क्षेत्र में जो है हम करते आए हैं। शिव मंदिर का वैभवशाली जीर्णोद्धार हो या फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी हॉल या शूटिंग रेंज बना, श्रीकांत जनता की जरूरतों को तुरंत अमल में लाते हैं। श्रीकांत शिंदे युवा दिनों की न सिर्फ धड़कन है बल्कि नील का वो पत्थर है जो दूसरे राजनेताओं को रास्ता दिखाता। आप इस सोसाइटी इस समाज के भाग और समाज को जो है समाज ने आपको दिया है, समाज को फिर से लौटाने का भी अवसर जो है आपके पास होता है। In recognition of Dr. Shrikant Shinde's work, we have a special message, and for this I would like to invite a member of the CSR Journal team here. Sir. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या विचारांची शिदोरी उराशी बाळगत, तसंच राज्यांचं तत्वनिष्ठ नेतृत्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पितृसंस्कारांचं मोल जपत
आपण राजकारणात टाकलेलं पाऊल आश्वासक ठरत आहे. आपलं उच्च विद्याविभूषित तरुण तेजांकित व्यक्तिमत्व तरुणांसाठी प्रेरणा स्रोत ठरत आहे. गोरगरीब रुग्णांच्या सेवेमुळे आपल्या पाठीशी भक्कम सदिच्छांचं संचित आहे. त्यासाठीच आपल्याला लीडरशिप फॉर सोशल चेंज द CSR जर्नल एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2022 ने गौरविण्यात येत आहे. Thank you. I invite Dr. Shrikant Shinde to receive the Leadership for Social Change Award and request Mr. Amit Upadhyay and Mr. Ashish Chauhan to do the honors along with the chief guest of the day. इतने सालों में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन ने लाखों लोगों तक सेवा पहुंचाई है. मैं बताऊं उन सेवाओं के बारे में उसके पहले एक खास मोमेंटो जो कि NSC की तरफ से है वो भी हम प्रेजेंट करना चाहेंगे श्रीकांत शिंदे जी को. इनकी फाउंडेशन के बारे में अगर हम बात करें तो फाउंडेशन के चलते हजारों लोगों के ऑपरेशन के लिए ये आगे आए हैं ताकि सही समय पर उनका ट्रीट मुमकिन हो पाए. फाउंडेशन ने हजारों बच्चों को भी सपोर्ट किया है जिसमें हार्ट ऑपरेशन जैसे कार्य किए गए हैं ताकि वो एक सेहतमंद जीवन की कल्पना कर सके. इसी के साथ हेल्थ स्पेस में फाउंडेशन ने एम्बुलेंस वितरण जैसे पहल की है और कार्य अच्छी तरीके से संभाल लिया है. पर्यावरण के क्षेत्र में एक दिन में 1 लाख वृक्षारोपण की भी पहल की है इन्होंने, जिसमें से अभी तक 30,000 झाड़ जो है वो जीवित भी है. द CSR जर्नल अपना आभार प्रकट करते हैं और ऐसे कार्यों के लिए फाउंडेशन की सराहना करते हैं. डॉक्टर श्रीकांत, एक्चुअली आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू. सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जी माइक है, आपसे जानना चाहूँगी कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? सबसे पहले तो मैं CSR जर्नल का और अमित जी का बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ. और आज इस आपके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनका भी आपके तरफ से यहाँ पर उनका स्वागत करता हूँ. और मुझे लगता है कि ये CSR जर्नल जो है बहुत बड़ा काम कर रहा है कि दूर दराज इलाकों से अलग अलग लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटीरियर्स में काम कर रहे हैं ऐसे भी लोगों को ढूंढकर जो है उनको अवार्ड्स देना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है. क्योंकि हर एक जन जो काम करता है सोसाइटी के लिए उसको एक प्रशंसा की आवश्यकता होती है जिससे उसको एक और बूस्ट मिलता है, एक अलग एनर्जी मिलती है. और वो मुझे लगता है कि CSR जर्नल यहाँ पर कर रहा है. और यहाँ पर मैं सभी अवॉर्डीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ. यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कॉरपोरेट्स भी है और उसी के साथ में कुछ इंडिविजुअल्स भी है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं. और आपने कहा भूमिका, मुझे लगता है कि आज यहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल जब भी बोलते हैं तभी इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ख्याल मुझे लगता है कि आपने आपके जो पूरे पैशनेट होकर आप दे रहे थे कि खुद हर एक व्यक्ति अगर सोचेगा इस अपने जीवन में कि कुछ तो अच्छा काम करना चाहिए, मुझे लगता है कि उसको भी इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कह सकते हैं. और मुझे लगता है कि आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनको ही मैं बचपन से देखते आया हूँ कि कैसे काम जो है वो यहाँ पर उनके बहुत यंग एज से जो है वो करते आ रहे हैं. और सबसे ज़्यादा करीब से देखने का मौका जो है मुझे मिला है और उनसे ही सीखते यहाँ पर आया हूँ मैं. क्या बात. तो आज इस मुकाम पर ये पहुँचे हैं और मैं यहाँ पर CSR का बहुत बहुत धन्यवाद भी अदा करता हूँ कि आज एक पॉलिटिशियन को यहाँ पर आप अवार्ड दे रहे हैं. मुझे लगता है कि सभी को ये हजम बात होती नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियन भी जो है मुझे लगता है कि अलग ढंग से आज आपने जिनको बुलाया है यहाँ पर उनकी भी एक जो जर्नी है वो एक अलग जर्नी है. बहुत कम उम्र से उन्होंने जर्नी शुरुआत की और आज सर्वोच्च स्थान पर जाकर वो आज यहाँ पर महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं. तो आज उनसे ही हम सीखने की कोशिश करते हैं. फाउंडेशन के माध्यम से काम करते आए हैं यहाँ पर और लोगों को थोड़ी बहुत मदद जो है करने का कोशिश जो है हम यहाँ पर करते रहते हैं. सर, हम फाउंडेशन की बात कर रहे थे यहाँ पर और जितना सब कुछ आप अचीव कर पाए हैं इतने कम समय में वो बहुत बड़ी बात है, काबिल तारीफ़ है. कुछ मैसेज है जो कि आप फाउंडेशन की तरफ से देना चाहते हैं, अपने विजन के बारे में बताना चाहते हैं? मेरा जो फाउंडेशन है
डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन, और हमने जो मेडिकल हेल्प सेल शुरू किया है वो वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी के नाम से शुरू किया है यहाँ पर। और इसके माध्यम से, और जिसके प्रमुख मार्गदर्शक जो है आज यहाँ पर चीफ मिनिस्टर सर यहाँ पर खुद बैठे, और इसके माध्यम से जो है कैंप्स लेना, दूर दराज इलाकों में काम करना, और हर एक जन तक जो है वो हेल्थ केयर कैसे मिले, इसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं। हालांकि सरकार है, सरकार अपने माध्यम से काम करती है, लेकिन सभी चीज़ जो है सरकार नहीं कर पाती, इसलिए तो कॉरपोरेट्स यहाँ पर बैठे, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर हम जिसको कहते हैं कि CSR के माध्यम से जो है जन जन तक सुविधा जो है पहुँचनी चाहिए, सरकार के साथ जो है काम करना चाहिए। तो मेरा भी यहाँ पर जो है आप सभी को यहाँ
कॉर्पोरेट्स यहाँ पर बैठे हैं, आप काम तो करते आ रहे, 2013 से ये CSR जो है लागू हुआ है, कानून बना है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले जो है, उससे पहले से बहुत सालों से जो है भारत का कल्चर है, महाराष्ट्र का कल्चर है कि हम देने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। टाटा जैसे इंस्टीट्यूट है जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। Memento from our chief guest. Thank you so much. I would like to thank all the partners once again for supporting and for being there. इसी के साथ ये मेरा सौभाग्य है अब कि मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँ हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री एकनाथ शिंदे जी को कि वो पोडियम पर आएँ और आज की यहाँ पर हमारी सभा है उन्हें एड्रेस करें। सर, ये मेरा सौभाग्य है। सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा। अमित भाई CSR जर्नल के प्रमुख, तुम्हाला पण धन्यवाद देतो। आपने बहुत ही एक अच्छा ये उपक्रम कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस अवसर पर उपस्थित नेशनल स्टॉक सेंटर के MD CEO आशीष कुमार चौहान जी, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, डॉक्टर अभय बंग आहेत समोर, खूप मान्यवर आहेत, आमचे अधिकारी आहेत, सभी उपस्थित महानुभाव और सभी अवार्ड विनर्स, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि CSR जर्नल एक्सीलेंस अवार्ड में जिन लोगों ने बहुत ही विविध क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया है, मुझे क्या मिलेगा यह किसी ने सोचा नहीं। और बहुत ही दुर्गम रिमोट एरिया में जहां सभी जगह पर सरकार पहुंचती नहीं, वहां आप लोग पहुंचते हो, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही लोगों के लिए, समाज के लिए ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। मैंने अभी अभी कहा कि मुझे क्या मिलेगा इससे, मैं समाज को क्या दूंगा, मैं हमारे राष्ट्र को क्या दूंगा, हमारे देश को क्या दूंगा, ये सोचकर आप लोगों ने काम किया है। इसलिए आप सभी लोग अभिनंदन के पात्र हैं। कितने लोगों का काम जो है, डॉक्टर अभय बंग जी है, रिमोट एरिया में, गढ़चिरौली जैसे नक्सल एरिया में अभी वो काम करते हैं।
किसी भी प्रसिद्धि की लालसा नहीं है। अभी पहले भी कोई दंतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में कौन काम करते हैं, कई कंपनियां हैं। हमारी एक जिम्मेदारी है ये सोच के समाज के प्रति हम कुछ देना चाहते हैं और जिनको आवश्यकता है उसे जब आपकी मदद जब प्राप्त होती है, आपका सहयोग प्राप्त होता है, तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है, परिवार में बदलाव हो जाता है। जो दुखी परिवार है उसके दुख दूर हो जाते, उसका जीवन बदल जाता है, परिवार खुशहाली से फूला नहीं समाता। ये बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर श्रीकांत, उसका भी आपने, अमित उपाध्याय जी ने आपने उनका अभी अवार्ड देकर सम्मान किया है। जैसे वो मुझे देखते देखते काम करने लग गया, वैसे मैं भी उसको देख रहा हूं। दिल से करना चाहिए और जिसको जरूरत है उसको ढूंढ ढूंढ कर सहयोग करना, मदद करना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। इसलिए उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। कितनी कंपनियां हैं, कॉरपोरेट कंपनियां हैं, टाटा है, एल&टी है, कई महिंद्रा एंड महिंद्रा, सबका नाम नहीं मैं लेता हूं, लेकिन अपने आप में अपना कारोबार करते वक्त हम दूसरों को देना चाहते, दूसरों के दुख को बांटना चाहते, दूसरों के दुख को अपना समझते हैं, तब जाके ऐसा काम हम कर सकते हैं। और इसलिए ये जो आप कार्य कर रहे हो, जिन लोगों का यहाँ सम्मान हुआ है, जिनको अवार्ड्स मिले हैं, वो तो अभिनंदन उनका मैं कर दिया, अभिनंदन करता हूँ फिर एक बार। जिन्होंने ये कितने स्पर्धा है, एक से बढ़कर एक काम कर रहे समाज में, और जूरी लोगों का भी बड़ी जिम्मेदारी होती है, कैसे किसको उसको भी कैसे सिलेक्ट करे, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अभी जिनको अवार्ड प्राप्त हुए उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आपको देख के और लोग अच्छा काम करेंगे और इसमें अच्छा कार्य करने वालों की संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी। इसका फायदा, इसका लाभ समाज को ही आखिर में होता है। और इसलिए सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और वो काम आप लोग करते हो, ये बहुत ही अपने आप में बड़ी बात है। और इधर हम लोग अपने स्टॉक एक्सचेंज चौहान जी के, जिन्होंने मुझे बताया, देश का 35% धन यहाँ पर है। अमित उपाध्याय जी ने बराबर जगह ढूंढ निकाली है इधर पर। मैंने उनको कहा है, अभी ये व्यवस्था आपने बनाई है, साइबर अटैक, वो कुछ बताया उन्होंने, 3-4 लाख रोजाना होते हैं। बोले हम लोग तो मैनेज नहीं कर पाएंगे। वो तो बोले हमारी सिस्टम पहले से एकदम सेट है यहाँ पर। अबे आपके सिस्टम का हमारे समाज के लोगों को, हमारे सरकार को और यहाँ की जनता को फायदा होना चाहिए। उपाध्याय, अब आशीष कुमार जी, और आपने भी कहा हम सरकार और हम साथ साथ मिलकर काम करेंगे, अपने आप में बड़ी बात है। और CSR के माध्यम से, जब CSR का कानून 2012-13 में शायद हुआ था, लेकिन उससे पहले आप लोग CSR के माध्यम से लोगों को मदद करने का काम करते हो। कानून बन गया है, नियम बन गया है, इसके लिए नहीं कर रहे हो, आप दिल से कर रहे हो, दिल से समाज की सेवा कर रहे हो। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। ये डेडिकेशन, डिवोशन बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज के लिए, देश के लिए, अपने राज्य के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी देखा कि
इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने की एक सपना है, अपना टारगेट है। उसके लिए जोर शोर से काम हो रहा है। हमें अभिमान है, गर्व है, फक्र भी है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज इतनी ऊंचाई पे गई है कि G20 की प्रेसिडेंटशिप हमारे देश को मिल गई, हमारे देश को मिल गई। ये हर देशवासियों का अभिमान है, गर्व है। मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं दावोस गया था, वहां पर हमारे सरकार, राज्य सरकार जो महाराष्ट्र सरकार है, उसके ऊपर बहुत भरोसा जताया लोगों ने। मैंने कहा वी हैव ह्यूज पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वी हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड कनेक्टिविटी, स्किल मैन पावर, एम्पल लैंड, बहुत है हमारे पास, आइए हम लोग आपको रेड कारपेट देंगे। और आपको मैं बताऊंगा कि 6-7 महीने पहले सरकार का गठन हुआ, लेकिन 1,37,000 करोड़ के MOU साइन हो गए दावोस में। और उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री जी से आपकी सरकार का कैसा रिश्ता है। मैंने कहा कि वो हमें सहयोग करते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ही मकसद एक ही है, इस राज्य का विकास करना और इस देश को आगे बढ़ाना। ये महाराष्ट्र इज ग्रोथ इंजन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का ग्रोथ इंजन महाराष्ट्र है। और इसलिए महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश की प्रगति होगी। और इसलिए मैं आपको कहूँगा कि राज्य को, सरकार को, इस महाराष्ट्र को केंद्र सरकार के माध्यम से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से बहुत बड़ी मदद हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रही है, एजुकेशन में हो रही है, हेल्थ में हो रही है। और आखिर हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मकसद क्या है? राज्य को आगे बढ़ाना, राज्य का सर्वांगीण विकास करना। और इसलिए मैं आपको बताऊंगा अमित भाई कि इस राज्य में हमारे इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू है। आज समृद्धि नागपूर बंगसाहेब इकडे आहेत, नागपूर ते मुंबई 15-15, 16-16 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता था लोगों को। आज नागपुर से मुंबई 6 से 7 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, मुंबई से नागपुर भी पहुंच जाएंगे। कितना समय बचेगा, किसानों का कितना हेल्प होगा। मुंबई जो अपना MTHL है, मुंबई शिवड़ी नावा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक, देश का सिंगल लॉन्गेस्ट 22 किलोमीटर का सी ब्रिज है, जहां 3 घंटे 2 घंटे लगते हैं, सिर्फ 15 से 20 मिनट में मुंबई का नागरिक रायगढ़ पहुंच जाएगा। ये ऐसे कितने इंफ्रा प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग। मुंबई से सिंधुदुर्ग एक ग्रीन हाईवे जो एक्सेस कंट्रोल रोड बना रहे, मुंबई पुणे सीलिंग जो मिसिंग लिंक कर रहे, नागपुर से गोवा शक्तिपीठ कर रहे। ये कई है, मैं सब बताना नहीं चाहता हूँ। मुंबई में हम लोग आज है, मुंबई मेट्रो का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, 2A7 का, लाखों लोग उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। समय बच रहा है, पोल्यूशन कम होगा, लोगों के काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, समय बचेगा तो लोग परिवार को देंगे। आपके आशीर्वाद से, आपके ब्लेसिंग से इस राज्य सरकार, मैं और देवेंद्र जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस कर रही है। मेट्रो है, रोड्स है, हाईवे है, ये मुंबई के पॉटहोल्स है, वो सब पॉटहोल फ्री मुंबई करना चाहते हैं। कंक्रीट के रोड करेंगे, ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू है। मुंबई इंटरनेशनल सिटी है, ये इकोनॉमिक कैपिटल अपना है और दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। तो मुंबई में हम लोग अभी शुरुआत कर दी है। मुंबई बदलेगी, महाराष्ट्र बदलेगा, इसका विकास होगा। और हम यही चाहते हैं कि CSR के माध्यम से जितने भी लोग हैं, सरकार और हम एक ही पेज पे चलेंगे। और आपको जो भी आपके काम में कि कोई किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी, सरकार आपके साथ है, गवर्नमेंट आपका है, आपकी सरकार है। जो आप CSR के माध्यम से जो काम कर रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं।
दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं और इस राज्य को आगे बढ़ाना हम लोग चाहते हैं। और इसलिए मैंने अमित भाई से भी कहा है और हमारे आशीष चौहान जी को भी कहा है कि हम लोग मिलकर इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। कितने लोगों को जरूरत है, कई लोग आज श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन के कितने लोग काम कर रहे हैं, मंगेश वो सब टीम, कोई अपने पूरे दिल से कर रहे हैं, एकदम पूरी तरह हम समाज के लिए कुछ करना चाहते, इस भावना से करते। छोटे छोटे बच्चे मैं मेरे जन्मदिन पे देखता हूँ, जुपिटर जैसे बड़े अस्पताल में जो हार्ट का ऑपरेशन होता है, कैसे कर पाएंगे वो? मेरे ख्याल से कितने, कई हजारों, 5,000 छोटे बच्चों का हार्ट का सर्जरी किया है। उनको एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसे कई काम है, अभय जी है, कितने लोग समाज में हैं कि हम समाज का कुछ समाज को देना चाहते। हमारी समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है और इसलिए मैं भी आपको कहता हूँ कि हमारी सरकार जो है, आप एक जनता की सरकार है। जनता की सरकार जनता के भलाई के लिए बनी हुई सरकार है और इसलिए हमारे सरकार में आप अगर 6-7 महीने, इतने कम समय में जो अपने सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो अगर देखेंगे तो सब निर्णय जो है हर सेक्टर के लिए है। हर सेक्टर के लिए जो निर्णय लिए हैं, हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। हम हमारे खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहते, हम सिर्फ और सिर्फ लोगों के उन्नति, लोगों के प्रगति और सरकार, ये राज्य की प्रगति, यही हम चाहते हैं। इसलिए आपका साथ, आपका सहयोग हमें चाहिए, हम और आप एक ही। इसलिए जो भी आप व्यापार, उद्योग सब करते हो, इसमें किसी भी तरह की, किसी भी बात की अड़चन आपको नहीं आएगी। इसलिए नए नए जो उद्योग आ रहे, इंडस्ट्री आ रहे, उनको भी हम लोग ने बहुत सुविधा देने का फैसला किया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, कैपिटल सब्सिडी हो, जीएसटी सब्सिडी, उसमें हेल्प हो, सब। तो निश्चित रूप से सीएसआर के माध्यम से हम लोग बहुत काम करेंगे। उसको जो ज़रूरतमंद है उसको देने का काम हम करेंगे। सरकार और आप लोग सब एक ही हो, इतना ही मैं कहता हूँ। और सीएसआर जर्नल के इस प्रोग्राम में मैं आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए आपके सभी सीएसआर जर्नल के टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। जिनको अवार्ड मिले उनको धन्यवाद, उनका अभिनंदन। आगे भी ऐसा ही काम करते रहिए। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी की तरफ से, सीएसआर जर्नल की टीम की तरफ से, कि आप आज यहाँ पर आए और आपने अपना कीमती समय जो है वो यहाँ पर हम सभी को दिया। टू कॉल अपॉन अनुराधा देवनानी, द सीएसआर जर्नल, टू डिलीवर द वोट ऑफ थैंक्स फॉर द इवनिंग। अनुराधा, ऑल योर्स। Thanks, Ruchi. What started as a singular thought has today become a nationwide movement, all because of you all. The CSR Journal is immense to each and every individual and organization for their continuous support, especially our esteemed jurors, participants and others. Your efforts contributed greatly to the success of this event. I look forward to this growing relationship which enables to achieve our CEO and Editor-in-Chief Amit Upadhyay's mission to put India first in our lives. Thank you everyone for making an impact. Thank you for bringing the change. Have a good night and rest well, knowing that you made it tonight. Take care. This is Anuradha Devnani signing off on behalf of the CSR Journal. Don't miss out having dinner. It's arranged there, so please do the honors. Thank you. Thank you so much, Anuradha.
अब जो देश को आगे बढ़ते देख हमने अपने अंदर देशभक्ति का बीज बोया है, आज उसे फिर एक बार अपने राष्ट्रीय गान के साथ सराहा जाए. I request everyone to please stand up for the national anthem. I know there's a lot of commotion, but I would request you all to please give us one more minute so that हम सभी national anthem के respect में एक साथ यहाँ पर खड़े हो सके. Can we have the national anthem, please? Thank you so much, ladies and gentlemen. Your